Check. Hello. Yes. Guys, are we ready? Yes. Very good morning, my dear friends. दोस्तों गुड मॉर्निंग. राइट, वंडरफुल. लगता है एक दो दिन के क्लास के बाद आप लोग सब ट्यून हो गए सुबह से शाम तक बैठने के लिए. आदत हो गया अभी थोड़ा, या अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? सी, लॉजिक इज सिंपल. इट इज डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट, एंड इट हैज टू बी डिफिकल्ट, एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट. लॉजिक सिंपल है, वो आदत हो जाएगा अपने आप, डोंट वरी. ठीक है, बट स्टे पॉजिटिव, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. If you take things negative that अरे यार सुबह से रात तक बैठ रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, all that mindset will change the whole game. But if you think positively that yes, I am doing this for myself, yes, इसके पीछे एक purpose है, yes, there is one strong thing what I am doing, then your mental strength will increase. Physical strength, mental strength is always in our control only. जितना पतला होना है मोटा होना है अपने हाथ में. In the same way, how strong we mentally will become is all in our hands. वो किसी और के हाथ में नहीं है सर, बिल्कुल अपने हाथ में ही है. क्लियर है ना बेटा? जितना हम अपने आप को बोलेंगे कि भाई हम तू कर पाएगा, हम करेंगे. जितना अपने आप को बोलेंगे कि भाई तू सो जा, आराम कर, खत्म, उठने का मन भी नहीं करेगा. करेक्ट ना? फर्स्ट डे को क्या टाइम पे उठे थे, आज कितने बजे उठे थे? आपको आज पता है आंसर है खुद का. इफ इट इज सेम टाइम देन इट्स गुड, इफ इट इज चेंजिंग देन यू हैव टू लुक एट इट. क्लियर है? बोलना यार कुछ. डन माय डियर फ्रेंड्स. चलो, we were discussing the first chapter, introduction to income tax. In that, lot of points we discussed in that, but still there are some more points to talk, which we'll talk today. Today we can't complete this first chapter, but maybe tomorrow we might complete this chapter. But today we'll talk a lot of interesting points. Are we ready, everybody? Yes. All of us? Yes. Wonderful. Tell me, my dear friends, what are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Excellent. Circular notification कौन देता है? क्या क्या क्या? CBDT, which stands for Central Board of Direct Taxes. Correct? Everyone? Income Tax Act which year? 1961. Income Tax Rules which year? 1962. Annual Finance Act which year? Every year. Thank you so much. How will that Finance Act come into picture? Starting point? Budget. Budget is approved by both houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Then it becomes Finance Bill. Then the bill is signed by, then it becomes Finance Act. Clear? Every year it comes only once, but sometimes it comes twice also. When? In 2024, in the year of election, because the old government and the new government, both of them will present the budget. Clear? Everybody? Yes, when is the budget presented? 1st of February. Fix है क्या? Confirm? ठीक है, very good. Next, my dear friends, tell me, is every SSC a person? Yes. Hui? Yes. Good. Is every person an SSC? Exactly. Every SSC is a person, but every person is not necessarily a SSC. Now, who is a person? Which section defines person? Section 231 defines who is a person. अरे क्या पेजेस ढूंढ रहे क्या यार? जरूरत नहीं यार, बोलो ना यार. Person includes individual, HUF, company, firm, LLP, local authority, cooperative society, AOP, BOI, BJP, नहीं AJP. Wonderful, thank you. AOP, Association of Persons. BOI, मतलब BOI में जो भी है पूरे इंडिविजुअल्स ही है, बट AOP में इंडिविजुअल्स भी है, फर्म भी है, कंपनी भी है, कोई और भी है, सारे इंडिविजुअल्स तो नहीं है. लास्ट वाला क्या है? AJP. व्हाट इज AJP? स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. बराबर है ना दोस्तों? Are we clear? Yes. Excellent. Next question. Very, very important question. What is section 27? SSC. I told you yesterday, very, very important definition. कल कम से कम मैंने almost more than half an hour I taught this section. अगर आपको याद है तो. है ना बेटा याद? बोलो, who is an SSC? SSC means any person who is liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of
any other person in respect of which he is assessable or loss sustained by him or such other person. It's correct, no? अभी ये समझ में आ रहा है कौन है ये? हाँ, छोटू, minor, exactly. In respect of minor, I am assessable. Correct, no? Next, second point. Person who is deemed to be an assessee. याद है ना, deemed to be an assessee. Last point. Assessee in default. बोलो बेटा, assessee in default में कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है. पहले वाला पॉइंट क्या है? Person who has not done TDS. जिसने TDS नहीं किया वो assessee in default है. सेकंड वाला केस क्या है? Person who has done TDS but not paid to government. ये तो और डेंजर आदमी है. TDS करके भी गवर्नमेंट को पे नहीं किया. करेक्ट ना? नेक्स्ट, थर्ड केस. Person who failed to pay advance tax. So these are the 3 cases which are covered in assessee in default. दोस्तों क्लियर है? Everyone, sir. Excellent. Next, tell me, what is section 2(9), 234 and section 3? Previous year का मतलब क्या होता है? Year in which income is earned. जिस साल इनकम कमाए उस साल को क्या बोलेंगे बेटा? प्रीवियस ईयर. उसके बाद क्या बोलेंगे उसको? असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर पहले आता है बाद में आता है? प्योर कॉमन सेंस. अभी तो प्योर कॉमन सेंस है. इतना क्लैरिटी आ गया अपने को. इफ प्रीवियस ईयर इज 23-24 है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? 24-25. If previous year is 24-25, assessment year is 25-26. Is assessment year always 12 months? Answer is yes. Is previous year always 12 months? No, not necessary. Because previous year अगर business middle of the year में चालू करे तो middle of the year से लेके अपन मार्च तक ही देखते. तो जरूरी नहीं है कि previous year हर बार 12 months हो. But assessment year तो पक्का 12 months ही है. Clear now? No doubts with this, right? Excellent. Yesterday, I discussed something very, very interesting with you, where I spoke about something called 115 BAC. What is BAC? 115 BAC? Default tax regime. Name only says default. मतलब यही है. But इसमें थोड़े exemptions नहीं मिलेंगे, थोड़े deductions नहीं मिलेंगे. क्या नहीं मिलेंगे वो बाद में पढ़ेंगे. अरे बताया ना आपको ऑलरेडी. बट उसका टैक्स रेट्स अलग है. एज क्राइटेरिया कुछ है क्या? व्हाट आर द टैक्स रेट्स? कम ऑन. अप टू 3 lakhs nil, 3 lakh to 6 lakh 5%, 6 lakh to 9 lakh 10%, 9 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakhs 20%, above 15 lakhs 30%. बराबर है ना? 3 लाख बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, बट लास्ट में सीधा 15 लाख के बाद 30%. क्लियर है एवरीवन? गुड. अगर किसी बंदा बोल रहा है मेरे को डिफॉल्ट अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट कैन यू डू? ही कैन गो फॉर ऑप्शनल. इज ऑप्शनल ऑप्शनल? अरे नो, क्या बोल रहे हैं यार? इज ऑप्शनल ऑप्शनल? ऑफ कोर्स इट इज एन ऑप्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑप्शनल. आप मुझे बोलो, डिफॉल्ट छोड़ के ऑप्शनल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? Depends. What a brilliant answer, man. Good. I am enjoying this. It obviously depends. यार तेरे पास exemption deduction ज्यादा है तो जाना by default, sorry optional में. तेरे को लगता है exemption deduction कम है तो बैठना default में, फिर जिसमें टैक्स कम है उसमें बैठ. पर वो बोल रहा है मुझे ये साल default में, अगले साल optional में, फिर default, फिर optional. चलेगा क्या? चलेगा, provided you do not have PGBP income. अगर आपके पास PGBP income है और आप default में है, उससे हटके हम बोल रहे मैं optional में गया, जा. उसके बाद बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे ऑप्शनल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वापस जाना है डिफॉल्ट में. जा सकता क्या? जाओ डिफॉल्ट में वापस. फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं, एक बार एंट्री है एग्जिट है बस. एंट्री मतलब एंट्री इनटू ऑप्शनल. एक बार एंट्री इनटू ऑप्शनल है, फिर एग्जिट फ्रॉम ऑप्शनल है. एक बार वो खत्म हो गया, उसके बाद भाई तू जिंदगी में नहीं आ सकता ऑप्शनल में अनलेस यू डू नॉट हैव पीजीबीपी इनकम. क्या बात है? पीजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. बराबर है ना? इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना बेटा. अकाउंट्स इज एन आर्ट मैन. अकाउंट्स तो एक ही बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. अकाउंटिंग इज एन आर्ट, बट टैक्सेस smart, wonderful. That's why I told you very clearly. In income tax, we have got 5 heads of income. In every head of income, computation is different, and lot of places tax rate is different. इसलिए
whichever head of income it pertains, we should take into respective head of income. So what are the 5 heads of income? Come on. Income from salaries, income from house property, profits and gains from business or profession, income from capital gains, income from other sources. These are the 5 heads of income. बराबर है ना बेटा? एक और बार. Income from salaries, house property, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस. ये है अपना 5 हेड्स ऑफ इनकम. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का इनकम कंबाइन करने के बाद जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम. बराबर है ना बेटा? अब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या लेस करेंगे बेटा? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शंस अंडर चैप्टर, और डिडक्शंस का 2 वैरायटीज है. एक तो पेमेंट बेस्ड है, दूसरा जो है इनकम बेस्ड है. जो पेमेंट बेस्ड है, जो एक्सपेंस के रिलेटेड है, उसको सीधा लेस करो. जो इनकम बेस्ड है उसको इनकम दिखाओ, फिर डिडक्शन ले लो. आई थिंक वी ऑल आर ऑन ट्रैक. बराबर है ना? तो 5 हेड्स ऑफ इनकम कंबाइन करने के बाद जो फिगर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. लेस करने के बाद क्या फिगर आएगा? अब आप मुझे बोलो, अगर टोटल इनकम का फिगर आया 12,58,634, फिर क्या करेंगे आप? 12,58,630 कर देंगे उसको. किसने बोला ऐसा करने के लिए? वंडरफुल. सी section 288A. When we learn with section number, that perfection will come. When we don't learn with section number and go blank, we'll go blank. I think you understood what I said. If you don't understand and we learn blank, obviously what will happen is we'll become blank. समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं. सेक्शन नंबर के साथ पढ़ाई करें तो बाप नेक्स्ट लेवल विल प्ले, नॉट नॉर्मल. विल बिकम मास्टर ऑफ सब्जेक्ट. डन. अब जो टैक्स निकालेंगे बेटा वो जीटीए पे निकालेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे? ऑब्वियसली. लेट अस से टैक्स फिगर इज 16. ज्यादा हो गया ना, 12 लाख में 16 लाख थोड़ी टैक्स आता है. समझो बेटा 4,03,517. उसको क्या करेंगे? 4,03,500. किसने बोला ऐसा करने के लिए? सेक्शन 288A. 288B. 288A is rounding off of income, total income. 288B is rounding off of tax payable. कल लास्ट में वही 2 नोट लिखे थे अपन. बराबर है बेटा? एवरीवन गुड. एंड फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, जो भी टैक्स पेबल फिगर रहेगा उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते बेटा? HEC. एट व्हाट रेट? 4%. याद है ना बेटा? दोस्तों बोलो ना बेटा, समझा क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? श्योर माय डियर फ्रेंड्स? Can we proceed? Good. Now let's listen. Next interesting concept. Listen very clearly. Friends, what is section 4 beta? Chargeability section. Now let me write that in detail once again. हाँ चालू करो ना. देखो वहां पे रिमोट है क्या? Or take this and try. देखो बेटा, section 4 is a chargeability section which says that income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax. नहीं हुआ? is chargeable to tax in which year बेटा? Assessment year. दोस्तों क्या बोल रहा है ये लाइन? Come on tell me. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. So name only says the income which is earned by whom? Assessee. Obviously who will pay tax is assessee only. अब हो गया बोले, नहीं हुआ बोले? अच्छा कुछ तो हुआ, हो गया, ठीक है. Income earned by an assessee. Sir assessee is different, person is different ना? अब person कौन है, assessee कौन है, आप जानते ना अपन? अरे बोलो ना यार. Friends, now tell me for example, there is a salaried employee, salary 10,000 per month, per annum 1,20,000. Is he a person? Is he an assessee? No. दोस्तों बोलो यार, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Please do participate, please don't relax. Morning is not a time for you to relax and sleep. हो गया? We are all young people. Early 20s or
अर्ली 20s और लेट टीन्स, विच एवर कैटेगरी यू बिलोंग टू. बराबर है ना यार, ये एज में कैसा रहना चाहिए यार? यू हैव टू बी स्टबर्न एंड स्ट्रांग मैन टू डू समथिंग. ऐसा सुस्त बैठे तो कैसा यार? यू हैव टू बी सो एक्टिव. करेक्ट नो? 90% आर वेरी एक्टिव बट 10% ऑफ देम क्या है यार ये जिंदगी, क्या कर रहा हूँ यार मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे. See, that's not how you have to look at it, man. And there are people outside who are struggling also. आपको लग रहा होगा आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे, आपके बीकॉम फ्रेंड्स जो सीए नहीं कर रहे वो बहुत आराम कर रहे, वो आराम ही करेंगे बाद में भी, बाद में भी आराम ही करेंगे, बट बाद में आपके हाथ पर कुछ काम रहेगा, वो फर्क बहुत रहेगा. सो यू शुड फील प्राउड दैट यू आर अ सीए स्टूडेंट. फील प्राउड मतलब ऐसा कॉलर उठा के बैठना नहीं है, काम भी करना है. बराबर है ना? तो प्लीज come on my dear friends, come on now with full energy. What is section 4? Chargeability section. What does it say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. Yesterday one student after the class he asked me one question. Sir, assessment year previous year को आपने क्लास में PY AY लिखे, एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? आंसर इज यस. PY AY चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है क्या बेटा? अब एसएससी का तो शॉर्टकट नहीं हो सकता है. एसएससी का क्या शॉर्टकट बनाएंगे? गलत मीनिंग आ जाएगा. नेक्स्ट, समझ गए ना बेटा? या इनकम अर्न्ड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन विच ईयर? असेसमेंट ईयर. मतलब जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे उसका चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स कब आएगा बेटा? असेसमेंट ईयर में आएगा. बट इसका थोड़े एक्सेप्शन है बेटा. व्हाट डज एक्सेप्शन मीन? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब अगेंस्ट द बेसिक रूल. देयर इज अ बेसिक रूल, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक रूल. करेक्ट नो फ्रेंड्स? कंडीशन नहीं है ये. एक्सेप्शन मतलब विच इज अगेंस्ट द बेसिक रूल. क्या एग्जांपल दूं आपको? हाँ, अभी दूंगा एग्जांपल. सी जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट इन पुणे ड्यूरिंग क्लासेस दे टेल दैट जनरली संडेज विल गिव हॉलीडे, बट सम संडेज एवरीबॉडी टेक क्लास. आपको तो पता ही है, फाउंडेशन बहुत सारे लोग यही बिल्डिंग में कर चुके हैं, तो आपको तो पता है. और बहुत बार ऐसा होता है संडे को तो उल्टा क्लास जल्दी चालू होता है, और उल्टा संडे को कभी कभी 3-4 लेक्चर होता है. बराबर है ना? स्टूडेंट इज टेलिंग सर क्या बोल रहे हैं सर आप इनडायरेक्टली? नहीं कुछ नहीं, डोंट वरी, आई विल नॉट टेक क्लास एवरी संडे, सम संडेज ओनली आई विल टेक. ओके, नॉट एवरी संडे, डोंट वरी. अभी हम वो संडे टॉपिक छोड़ के यहां पे आ जाए. चलो माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन. एसी आपको ऑफ करना है तो लेके ऑफ करो ना यार, मुझे मत पूछो प्लीज. टेक इट एंड पुट इट ऑफ, यू डू व्हाटएवर यू वांट, बट लिसन टू व्हाट आई एम टीचिंग. बाकी सब आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो, बट मैं जो पढ़ा रहा हूं तो यही ध्यान दो. उसके बाद ऑल योर्स. क्लियर है ना बेटा? यार बोलो ना यार. बिकॉज आई नॉट गेट इन टू इट. इफ आई गेट इन टू डिस्कशन, आप बोलेंगे सर एसी कम करो, ये बोलेंगे सर मेरे को ऐसा गर्मी लग रहा है एसी ज्यादा चाहिए, फिर और एक बोलेंगे सर मेरे को एसी पसंद ही नहीं है, निकाल दो उसको, फैन चला दो. फिर बोलेंगे सर मेरे को हवा ही नहीं आ रहा, एक पेपर ले लो ना सर. ऐसा सर अभी हर एक का फुलफिलमेंट मुश्किल है सर फुलफिल करना, तो आई लीव द चॉइस टू. ठीक है, डोंट ब्रिंग दैट डिस्कशन टू मी. अगर आप मेरे पास डिस्कशन लेके आएंगे तो मैं सब कुछ बंद कर दूंगा एक्सेप्ट प्रोजेक्टर, और मैं क्लास पढ़ा दूंगा. ठीक है ना? हैप्पी? डन, थैंक यू. सेक्शन 4 बोलो बेटा. व्हाट इज सेक्शन 4? चार्जेबिलिटी सेक्शन. अभी तक 4 बार बोल दिया मैं. क्या ये? इनकम अर्न्ड बाय एन असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर. मतलब जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे वो असेसमेंट ईयर में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. बट हम बोल रहे हैं उसका एक्सेप्शन. मतलब क्या है? इट डजंट अप्लाई. इफ इट डजंट अप्लाई देन व्हाट विल अप्लाई? अरे मेरा क्वेश्चन समझे क्या? ये जो बेसिक रूल है ना, उसका हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं. मतलब उस केसेस में बेसिक रूल अप्लाई नहीं होगा. अब बेसिक रूल अप्लाई जब नहीं होगा तो क्या होगा? इनकम अर्न्ड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. अरे नॉर्मली रूल क्या है? प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाएंगे उसका चार्जेबिलिटी टू टैक्स कब आएगा? असेसमेंट ईयर में आएगा. हम क्या बात कर रहे हैं अभी? एक्सेप्शन की बात करने वाले. मतलब दे आर अगेंस्ट द बेसिक रूल. बेसिक रूल क्या होता है? प्रीवियस ईयर में जो कमाए उसका असेसमेंट ईयर में चार्जेबल टू टैक्स होगा. बट हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन, मतलब अगेंस्ट द रूल. अगेंस्ट द रूल मतलब ऑपोजिट हो गया ना यार. फ्रेंड्स, सर सिंपल लॉजिक है यार. कोई बंदा है जो डाइट कर रहा है, डेली मॉर्निंग जूस, इवनिंग स्नैक्स, प्रोटीन्स शेक, फिक्स्ड मेनू है, बट वो बोल रहा है संडे इज ए चीट डे.
अब संडे इज ए चीट डे, मतलब संडे भी वही खाएगा क्या, या ऐसा है कि वही वही ज्यादा क्वांटिटी खाएगा? नहीं ना यार, उस दिन तो नेक्स्ट लेवल टैलेंट दिखाएंगे अपना। फ्रेंड्स, करेक्ट? नो फ्रेंड्स? Exactly. So we're talking about something called exceptions, which are against the basic rule. Come on. First point. Shipping business of non-resident. Shipping business of whom beta? Non-resident. Sir, logic समझो बेटा. There is a non-resident, foreign का बंदा है, जो इंडिया में ज्यादा रहता नहीं है, फॉरेन का बंदा है, वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब इंडिया में आ रहा है, कुछ सामान लेके जा रहा है, और वापस कब आएगा भगवान जाने। You're getting what I'm saying? There is a person who is a non-resident who is doing shipping business. Who is doing what business? He is coming to India, taking some articles, making money in India. इंडिया में पैसे कमाया और शिप में बैठ के जा रहा है वो। अब मुझे बोलो, गारंटी है क्या वापस आएगा असेसमेंट ईयर में वो? Is there a guarantee that he'll come back to Indian assessment year? Law is telling, जा, छोड़ के जा, निकल, टैक्स पे करके निकल। So you're getting what I'm saying? Friends, please speak out. I'll give a small example with the dates so that आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सर समझो बेटा, एक बंदा 10th अप्रैल 23 को इंडिया में आया, ठीक है ना? 6th जुलाई 23 को इंडिया से वापस जा रहा है, वो शिप में चले जा रहा है वो। फ्रेंड्स, एंड इज इन व्हाट बिजनेस? शिपिंग बिजनेस, मतलब शिप में आर्टिकल्स लेके जाने का उसका बिजनेस है, और 6 जुलाई को वापस जा रहा है वो। इज देयर ए गारंटी, मतलब ये प्रीवियस ईयर कौन सा है मुझे बोलो एक बार? प्रीवियस ईयर 23, 24। असेसमेंट ईयर कौन सा है? अब आप मुझे बोलो, असेसमेंट ईयर 24, 25 में आके टैक्स भरेगा, इसका गारंटी है क्या? अरे जो इंडिया में उसको पकड़ नहीं पा रहे ठीक से, जो गायब हो गए उसको कहां से पकड़ेंगे यार? तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? यू गेट आउट, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज पे टैक्स एंड गेट आउट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो इनकम कमाएंगे, पहले टैक्स पे करो, फिर बाहर निकलो। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ वन स्टूडेंट विल गेट वन डाउट, सर हाउ विल इनकम टैक्स नो ही इज गोइंग इन दैट शिप? हाउ विल इनकम टैक्स नो दैट ही इज गोइंग? किसी को ये डाउट आया बाई चांस? आया तो उसका आंसर भी बोल दूंगा। आपको आया ना बेटा ये डाउट? पता है मुझे, दिख रहा है वो चेहरे पे वो डाउट, अच्छा दिख रहा है डाउट, उसका आंसर हम दे देंगे। Logic is, sir, at every port in India, there is an income tax officer who is sitting. There is an income tax officer who is sitting. He will check the passport. When the person wants to leave out of India, he will put a stamp on that passport, then send the person out. And that department is called Immigration Department. अरे पिक्चर में तो देखे होंगे, लाइव में एक्सपीरियंस करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो पिक्चर में तो देखे होंगे, इमिग्रेशन का जो काउंटर रहता है, वहां पे स्टैम्प मारते वहां पे, बराबर है ना बेटा? एग्जैक्टली, आई थिंक आपको आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अब आप मुझे बोलो, सर इमेजिन आई एम द इनकम टैक्स ऑफिसर सिटिंग एट द पोर्ट, देयर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग द गुड्स एंड गोइंग इन द शिप। He is a person who is a non-resident who is doing shipping business. ये बंदा वापस नहीं आने वाला है, मैं उसको बोल रहा हूं टैक्स पे करो। अब आप मुझे बोलो, वो मोमेंट ऑफ टाइम पे P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, जनरल एंट्री पास करो, लेक्चर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, सब कर सकते क्या प्रैक्टिकली वहां पे? बोलो बेटा। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, इस केस में हम क्या बोलेंगे, 7.5%। कितना बेटा? 7.5% of turnover is deemed to be net profit. Some are telling 7.5% टैक्स भरना है क्या? दोस्त क्या बोल रहे हैं यार? 7.5% टैक्स नहीं बोला मैंने, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है उसका 7.5% डीम्ड टू बी नेट प्रॉफिट, उस पर टैक्स कैलकुलेट करके बोलेंगे पे कर और निकल। समझे क्या बेटा? Because practically it is not possible at that point of time to prepare the financials and arrive at the actual profit. इसलिए एक्ट बोल दिया 7.5% ऑफ टर्नओवर हम डीम्ड टू बी नेट प्रॉफिट मानेंगे। सर डीम्ड मतलब क्या है? अज्यूम्ड, बराबर है ना यार? फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेकंड पॉइंट, persons leaving India
ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया और स्टूडेंट लिखा पर्सन्स LIVING, LIVING में LEAVING में बहुत फर्क है. व्हाट इज LIVING? लिविंग, स्टेइंग इन इंडिया. LEAVING, अरे यार, इंग्लिश लैंग्वेज, वन लेटर वन वर्ड यू चेंज हियर एंड देयर मीनिंग विल चेंज. प्रिंसिपल, PRINCI PAL इज डिफरेंट, PRINCI PLE इज डिफरेंट. कितना फर्क है यार दोनों मीनिंग में. आप इंटरचेंज करके प्लीज यार. प्रॉब्लम ये है कि अपन आजकल इतना सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पे इतना आदत हो गया, हैप्पी बर्थडे बोलने को भी फुर्सत नहीं है. HBD. लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे बहुत आधे, मतलब आधे नहीं, थोड़े लोग ऐसे जो मेरे को हैप्पी बर्थडे लिखने का भी फुर्सत नहीं उनके पास. सिर्फ 3 ही लेटर HBD. मैंने भी रिप्लाई किया TY. मैं क्यों पूरा टाइप करूं? टी में मतलब थैंक यू, स्माइल भी नहीं लगेगा बाजू में क्योंकि वो इतना ही लिखा है HBD. फ्रेंड्स, पर्सन्स लिविंग इंडिया मतलब छोड़ के जा रहा है. मैं कंप्लीट नहीं किया अभी तक, आप टेंशन मत लो. आप ये मत बोलो कि अच्छा हर बंदा जो इंडिया छोड़ के जा रहा है उसको पकड़ेंगे क्या. नहीं, रुक जाओ. पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब वो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, भाई तू जा, बट टैक्स पे करके जा. पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. नाउ वन स्टूडेंट विल गेट वन डाउट. सर परमानेंटली तो समझ में आया, ये लॉन्ग टाइम क्या होता? लॉन्ग टाइम का मतलब होता है, इट्स नॉट डिफाइंड इन द लॉ, बट कॉमन सेंस इज दैट लॉन्ग टाइम मीन्स मोर देन 1 ईयर. कॉमन सेंस की बात है. अगर लेस देन 1 ईयर है तो कैसे भी वापस आएगा ना यार. अगर वापस आएगा तो वापस आने के बाद टैक्स भरेंगे बोलेंगे उसको. आप बोल सकते वापस, यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन, सर व्हाट इफ वो शॉर्ट टर्म बोल के गया बट उधर ही रह गया. ये वो इंडिया है क्या दूसरी कंट्री? नहीं हो सकता ऐसा. Some countries like Dubai, Pakistan, Sri Lanka and all, some countries, if you go there and stay beyond the prescribed period, you will be put in jail. So कैसे पता होता सर? अरे every Indian or every foreigner or every person should have something called passport when you go to foreign country, no? Passport कौन देता है अपने को? Indian government gives us passport. And if we want to go to Dubai, Dubai government should give us something called, बोलो, वीजा. उस कंट्री का वीजा लेके जाते ना अपन. अगर वीजा मिला अपने को 2 महीने का, अपन जो गए 2 महीना हो गया, उसके बाद भी हम उधर ही है. Do you think that government will keep quiet? They'll put us in jail. Some country like North Korea and all, they'll hang to death. मालूम ना नॉर्थ कोरिया, किम. नॉर्मल नहीं है, डेंजर कंट्रीज है वो लोग सब. बिकॉज दे आर ऑल मोर ऑफ मोनार्की बेस्ड कंट्रीज. किंग्स रूल है वो. किंग मर गया, उसका बेटा किंग बनेगा वापस. कोई इलेक्शन नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं. अपने जैसा कुछ नहीं होता है. अपने पास क्या, सब फ्रीडम है. किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपन. करेक्ट है ना. ग्रीन पे गाड़ी चलाएंगे और रेड पे भी चलाएंगे. यार पुलिस वाला बोल रहा है रुक रुक रुक, भाई 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 जाएंगे अपन. अपनी मर्जी है भाई, अपन कुछ भी करेंगे इधर. लॉजिक सिंपल है. Sir, since that topic has come, I'll tell you one interesting episode. When I went to Dubai one time with my family. So when I went to Dubai, I took international driving license and I went. Because मेरा एक दोस्त था दुबई में, उसका गाड़ी लेके मैंने घुमा. I took his car and I was only driving because I wanted to experience that left side driving. Left side driving होता है सर. So in Dubai, I wanted to do that left side driving. I took international driving license and went there. International driving license कुछ भी नहीं है. लाइसेंस का डिपार्टमेंट जाएंगे, 8 नंबर H नंबर पूरा बनाएंगे, वो लाइसेंस मिल जाएगा. आई गॉट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड आई वेंट टू दुबई. आई टुक हिज कार एंड आई ट्रैवल्ड. आई वाज एंजॉयिंग इन दुबई ड्राइविंग हिज कार. मैं अकेले जा रहा था, मजा आ गया मुझे. मतलब फैमिली के साथ था, बट एक लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं अकेला गया था उसका कार लेके. आई वाज एंजॉयिंग एंड हैविंग फन. देयर वाज वन सिग्नल. दिस वाज अ सिग्नल पॉइंट वेयर देयर वाज अ लाइन ड्रॉन. आई जस्ट क्रॉस 1 इंच, इतना ही. इधर तो अपन किधर ठहरते आप मालूम है ना आपको. सो जस्ट 1 इंच आई क्रॉस्ड. Only 1 inch I crossed. The moment I crossed 1 inch, within 15 seconds, मेरा दोस्त का फोन आया. बोला तू बाजू में गाड़ी रोक 2 मिनट. सिग्नल क्रॉस करके बाजू में गाड़ी रोक 2 मिनट. I crossed the signal and I parked the car left side. मैं उसको वापस कॉल किया, क्या हुआ रे? बोल रहा क्या हुआ रे? 500 दिरम्स हट गए पूरे. 500 दिरम्स अकाउंट से कट हो गया. 500 दिरम मतलब 1 दिरम इज 18 रुपीज. 500 दिरहम मतलब 9,000 रुपए कट गए उसके अकाउंट से.
क्योंकि वहां पे इधर के जैसा नहीं है कि पुलिस आके पकड़ेगा, देखेगा, उसको बोलेंगे नहीं, वैसा सिस्टम नहीं है इधर, सिस्टम नहीं है उधर. वहां पे ऑलरेडी देयर इज अ बार कोड, लाइक हाउ वी हैव ए फास्ट टैग हियर. नो सर, टोल गेट पास कर तो रोकते क्या अपन अभी, फास्ट टैग में अपने आप पैसे कटते निकलते ना. उधर क्या है, हर ट्रैफिक, हर सिग्नल पे वेयर देयर इज अ ग्रीन लाइट सिग्नल एंड ऑल, देयर इज ए स्कैनर इंस्टॉल्ड. दैट स्कैनर विल स्कैन द कोड ऑन द कार. कोड में स्कैन करके अपने आप बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएगा. वो आके पूछेगा भी नहीं फाइन भर, कट कर देंगे सीधा. 9,000 रुपए इंडिया में होते तो 100 रुपए पे करता था मैं, और वो भी इतना दूर. समझे क्या? दैट लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस इज देयर इन रूल्स. करेक्ट नो? इतना स्टोरी बोलने का रीजन क्या है, आपको वापस डाउट नहीं आना चाहिए कि फॉरेन अगर हम चले गए 2 महीना बोल के 2 साल चले गए तो वो नहीं हो सकता यार प्रैक्टिकली. यू कैनॉट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट. एंड गोइंग टू अ कंट्री विदाउट हैविंग ए वीजा इज ए पनिशेबल ऑफेंस. अरे आप देखे ना वो मूवी सलमान खान का, क्या था वो मूवी? हाँ, बजरंगी भाईजान. क्या याद है बेटा? व्हाट इज 27? एसएससी. अच्छा, इसको 2 मिनट लगता है. ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई नहीं. वो बजरंगी भाईजान मूवी याद है ना? वो जाता है ना इलीगली टू पाकिस्तान. नॉट जस्ट पाकिस्तान, एनी कंट्री यू कैन नॉट गो इलीगली लाइक दैट. वीजा इज मैंडेटरी. क्लियर है क्या? डन. चलो गेट बैक. हो गया, बहुत स्टोरी हो गया, टाइम पास हो गया. समझ में आ गया ये पॉइंट? चलो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. सेकंड पॉइंट, पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम का वर्ड एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट कॉमन सेंस मीनिंग इज दैट मोर देन 1 ईयर. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, AOP, BOI और AJP, which is formed for short duration or purpose. For example, my dear friends, ABC, three friends, they came together and they started doing business. उन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया, कंपनी नहीं बनाया, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. तीनों इंडिविजुअल्स ही है. अगर तीनों इंडिविजुअल है तो क्या बोलेंगे उसको? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. तीनों मिलकर बिजनेस किए, 4 महीना बिजनेस किए, उसके बाद बंद करके निकल गए. गवर्नमेंट ए के पास गया, टैक्स भरो. ए बोल रहा है मैं नहीं पे करूंगा, बी भरेगा. बी के पास गए, बी बोल रहा है मैं पे नहीं करूंगा, सी पे करेगा. सी के पास गए, सी बोल रहा है मैं नहीं पे करूंगा, ए पे करेगा. ऑफिसर को कुछ काम नहीं है क्या? इसलिए उन्होंने एक प्रोविजन डाले इसमें. वो क्या बोले हैं? AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब क्या है? वापस मत पूछो, कॉमन सेंस की बात है. लेस देन 1 ईयर. 1 ईयर से ज्यादा है तो असेसमेंट आ जाएगा ना यार. लेस देन 1 ईयर है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, 4-5 महीना काम करके बंद कर रहे, बंद कर भाई, मना नहीं कर रहे, बंद करो, बट टैक्स पे करके बंद करो. आई थिंक वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल. करेक्ट नो? चलो, बेसिक रूल क्या है? जनरल चार्जेबिलिटी सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4. क्या बोलता है सेक्शन 4? इनकम अर्न्ड बाय एन assessee during the income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax and assessment year. हम उसका एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें 5 पॉइंट है. 3 पॉइंट हो गया. पहला वाला पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. सेकंड पॉइंट, persons leaving India permanently or for long time. Next, AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. Are we clear? Everyone? Next, fourth point. Persons likely to transfer property to avoid tax. What is that he is doing, sir? Persons likely to transfer property to avoid tax. He is transferring property to someone else to avoid tax. You might think, sir, ये क्या हो सकता है? एक example दो ना, sir. I'll give. Don't worry. So let us say there is one person A, one person B. There is one tenant, and A is the owner. Owner कौन है बेटा? A.
and B is the friend of Mr. A. B is the friend of Mr. A. सर A का इनकम जो है ना, A's income is more than 20 lakhs per annum. कितना इनकम उसका? B का इनकम है 0 और B A का दोस्त है. क्लियर है ना? अरे दोस्त में इनकम में क्या लॉजिक है यार? सर क्लियर है ना दोस्तों? And the tenant is supposed to pay a rent of 2.4 lakhs per annum. Every month 20,000 per annum 2.4 lakhs. बराबर है ना बेटा? अब मुझे बोलो ये टेनेंट किसको रेंट पे करेगा? बोलो बेटा. ओनर को. Who is the owner? A. What A has done is A has transferred the property to B. Transfer the property to B. And this transfer is done on 29th March. और A ने टेनेंट को बोल दिया, टेनेंट तू एक काम कर, मुझे रेंट मंथली पे मत कर, डायरेक्ट 31st मार्च को पूरा साल का रेंट एक साथ पे कर. देन 31st मार्च को पूरा साल का रेंट एक साथ पे कर, मंथली पे मत कर. ऐसा कौन किसको बोला? Owner told to tenants, telling that please don't pay rent on monthly basis, entire year rent pay at a time on 31st of March. Clear, my dear friends? And what A has done, A has transferred the property to B on which date? 31st March, the 29th of March. And again took back the property on 6th April. अब आप मुझे बोलो टेनेंट को रेंट पे करने का ऑब्लिगेशन कब है? 31st March. Now when tenant has to pay rent on 31st March, वो रेंट किसको पे करेगा? I think you got the answer. Now what A has done? A has, अब आप मुझे बोलो ये 2.4 लाख किसके हाथ में जाएगा? अभी B के हाथ में जाएगा. तो टैक्स किसको भरना पड़ेगा? B को भरना पड़ेगा. बट आपको लगता है B कुछ टैक्स पे करेगा? क्यों? B का इनकम तो 0 है. अब ये 2.4 लाख पे आए तो टैक्स तो 0 होगा ना यार, बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड 2.5 लाख तक तो 0 है, विच इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. डिफॉल्ट टैक्स में तो 3 लाख है, ऑप्शनल टैक्स में 2.5 लाख है. टेल मी गाइस, नाउ हु प्लेड अ गेम? A played a game in order to, now read the points. Persons likely to transfer the property to avoid tax. Government is telling, don't try to play games like this. If you try to play games like this, we will take tax from you. That too, we will take tax in previous year itself. समझे क्या? Everyone, sir, all of us, what is it we are talking about? Exceptions to section 4. Section 4 says what? Chargeability section. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. उसका exceptions की हम बात कर रहे हैं. What is the first point in exception? Shipping business of non-resident. Second point, persons leaving India permanently or for a long time. Third point, AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. Then, persons likely to transfer property to avoid tax. दोस्तों क्लियर है? चलो बेटा वापस बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. सेकंड, persons leaving India permanently or for long time. Next, AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. Then, persons likely to transfer property to avoid tax. दोस्तों क्लियर है ना? सेकंड पॉइंट क्या है? पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. फोर्थ पॉइंट क्या है? persons likely to transfer property to avoid tax. फर्स्ट पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. व्हाट इज सेक्शन 27? 29 assessment year. 225A India. 231 person. 234 previous year. Section 3 Section 4 chargeability section. अब बोलो उसका exceptions क्या है?
shipping business of non-resident persons leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP, which is formed for short duration or purpose. Next, persons likely to transfer property to avoid tax. Clear, no? That is how we have to revise. See, God has given us a great brain, and out of that brain we use only hardly 2 to 3%. Scientifically proved that we can use only maximum 2 to 3% of our brain capacity. Correct na sir? Limited brain, unlimited concepts, unlimited subjects. So unless we revise again and again, it will not go inside the brain. इसके लिए मैं इतना ज़्यादा रिवाइज करता हूँ क्लास में. I revise like next level. अब जो चल रहा है ये 2-3 दिन की बात नहीं है, एंड तक कैसे रिविजन होगा. क्लियर है ना? We will revise like anything so that we cannot afford to forget. Even if we want to forget also, we can't forget. That like that will go and sit inside the brain. वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. Practice only make man perfect, woman also perfect. Don't worry. क्लियर ना बेटा? कितने पॉइंट हो गए? 4. और कितने बाकी है? हाउ, कैसे पता आपको? अच्छा मैंने बोला 5 है. क्या बात है. बोलो पहले वाला पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. देन person leaving India. Leaving spelling? Thank you. Persons leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Person likely to transfer property to avoid tax. Last point. Which point beta? Last point. That is discontinued business. Name only says discontinued business. That means what? Business को middle of the year में बंद कर रहे. Law is telling बंद करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टैक्स पे करके बंद करो. बट यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट है. इन दिस केस दे टोल्ड एवो में. एवो मतलब असेसिंग ऑफिसर. आई ऑलरेडी टोल्ड इनकम टैक्स में ऑफिसर को बोलते हैं हम लोग असेसिंग ऑफिसर. लॉजिक सिंपल है यार. ही इज असेसिंग अवर इनकम. ही इज व्हाट? असेसिंग अवर इनकम. दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एज असेसिंग ऑफिसर. क्लियर ना बेटा? एंड लॉ टोल्ड एवो में मतलब क्या? नहीं शायद मत बोलो. में मीन्स ऑप्शनल. इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर. अगर एवो को लगता है अभी टैक्स पे करके बंद करो, एवो बोलेगा अभी टैक्स पे करके बंद करो. ये एवो को लगता है कोई बात नहीं बेटा, असेसमेंटर में टैक्स पे करो, असेसमेंटर तक जाएगा. क्लियर है ना बेटा? बट फर्स्ट 3-4 केसेस में एवो में नहीं है. वो फर्स्ट 4 केसेस में भाई तो बंद करना है तो बंद कर, इंडिया से निकलना है तो निकल, बट टैक्स पे करके निकल. बट लास्ट केस में वो एवो का मर्जी है. एवो कौन है? मतलब कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर. बट उसको इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर बोलते. व्हाई आर वी कॉलिंग एज असेसिंग ऑफिसर? बिकॉज ही इज असेसिंग अवर इनकम. क्लियर नो? Practically we will tell the word assessing officer will assess the income of the assessee. Meaning समझे ना? Assessing officer will assess the income of the assessee. जो टैक्स पेयर है उसको क्या बोलेंगे? assessee. जो टैक्स पेयर है उसको क्या बोलेंगे? assessee. जो ऑफिसर है उसको क्या बोलेंगे? assessing officer. वो क्या कर रहा है? assess कर रहा है. इंग्लिश लैंग्वेज कमाल है. That's it. It's understood? बोलो बेटा. हो गया 5 पॉइंट. बट एक छोटा सा काम बाकी है. देन वी विल राइट दैट. दैट इज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 172. पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम सेक्शन 174. एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस सेक्शन 174A. Person likely to transfer property to avoid tax section 175. Discontinued business section 176. Clear है बेटा? Shipping business of non-resident with section 172. Persons living India permanently or for long time. 173 क्यों नहीं? आपको डाउट आएगा. 173 सेक्शन कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपको सी इंटर में रिलेवेंट नहीं है. ठीक है ना? आपके इंटर सिलेबस में सारे सेक्शंस नहीं है, थोड़े सेक्शंस है. बाकी कब पढ़ेंगे? बाकी में थोड़ा फाइनल में पढ़ेंगे. और बाकी सर
जब सीए बनने के बाद जब काम आएगा तब पढ़ेंगे. क्लियर है ना बेटा? अगर पूरा इनकम टैक्स एक्ट अगर आपका सिलेबस में है 600 मार्क भी कम पड़ जाएंगे, उतना बड़ा है इनकम टैक्स लॉ. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, विच सेक्शन? व्हाट इज 174? Person leaving India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. 174B. नहीं है. थैंक यू सो मच. नहीं है. आप नया मत बनाओ कुछ. नहीं है. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. Discontinued business. कितने पॉइंट्स है बेटा? 5 पॉइंट है. वापस लास्ट टाइम टेल मी व्हाट आर द 5 पॉइंट्स. शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम. देन AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Persons likely to transfer property to avoid tax. Last one. Discontinued business. That's it. Are we clear till here? Everyone, sir? Excellent. Chalo, let's start writing. I think yesterday the last thing we wrote was note 1, 2, 3. बराबर ना? चलो. Section 4. Section 4 chargeability section. Section 4 chargeability section. Section 4 chargeability section specifies that Section 4 chargeability section specifies that income earned by an assessee during the previous year, income earned by an assessee during the previous year shall be chargeable to tax income earned by an assessee during the previous year shall be chargeable to tax in कब बेटा? assessment year. Full stop. However, full stop. However, comma. Please put a comma after however. However, comma. There are certain exceptions. However, there are certain exceptions. However, there are certain exceptions. Number one. Shipping business of non-resident. Shipping business of non-resident. Shipping business of what beta? Non-resident. Bracket में लिखो 7.5% of turnover. 7.5% of turnover is deemed to be net income. 7.5% of turnover is deemed to be net income. सेवन 7.5% of turnover is deemed to be what beta? Net income. दोस्तों clear है? Everyone? 7.5% of turnover is deemed to be net income. Put a hyphen and write section. Which section beta? 172. Second point. Second point. Persons leaving India. Persons leaving India
Persons leaving India permanently. Persons leaving India permanently or for long time. Persons living India permanently or for long time. Section, which section beta? 174. Next point. AOP, AOP or BOI or AJP formed for AOP, BOI, AJP formed for a short duration or purpose. Short duration or purpose. Put a hyphen. Section, which section beta? 174A. Section 174A. Next point. Persons likely to transfer property to avoid tax. Persons likely to transfer property to avoid tax. Section, which section beta? 175. Last point. Discontinued business. Discontinued business. Which section, my dear friends? 176. ब्रैकेट में लिखो बेटा एवो में. एवो में. एवो का एवो मतलब एवो में. It's not mandatory, it is optional. It's a discretion of assessing officer. That's it. I think we are clear till this point, everybody. दोस्तों बोलो. सबको समझ में आया क्या इधर तक? पक्का? चलो बेटा सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सर क्वेश्चन नंबर 1. मिस्टर ए एज कितना है बेटा? 45. इनकम इज 8,10,000. डिडक्शंस इज 1 लाख. कंप्यूट टैक्स अंडर व्हाट डिड आई से? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का कौन सा सेक्शन है बेटा? 115 BAC. सेकंड क्वेश्चन. बी एज 56. इनकम इज 18 लाख. डिडक्शन 3 लाख रुपए. कंप्यूट टैक्स अंडर ऑप्शनल. उसका सेक्शन नंबर कुछ है क्या? बोलो बेटा. नहीं. थर्ड बिट. मिस्टर सी एज कितना है बेटा? बेटा बोलो. इनकम कितना दिया मैंने? डिडक्शन कितना दिया?
कंप्यूट टैक्स अंडर डिफॉल्ट एंड कर सकते हैं आप लोग? कैलकुलेटर है आपके पास? चलो 5 मिनट्स टाइम, सॉल्व इट। और जहां पे भी टैक्स आएगा फाइनल आंसर, उसको आप क्या ऐड करना है आपको? 4% HEC। HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलो बेटा करो, प्रैक्टिस हो जाएगा, सॉल्व करो। और जो फ्रेंड्स आज ही आए, डोंट वरी, योर फ्रेंड्स विल हेल्प यू। हेल्प करना आपके दोस्त को, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, पता है समझ गया मैं, वो आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो मैं हूं। डन। क्वेश्चन तो लिख लो पहले। फर्स्ट वाला हो गया क्या? बोलो बेटा, फर्स्ट वाले में इनकम कितना है बेटा?
डिडक्शन कितना है? डिडक्शन 1 लाख है क्या? आप मुझे बोलो, विल कंप्यूट टैक्स ऑन विच फिगर? विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 8,10,000. क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट में तो डिडक्शन एग्जाम्शन आना ही नहीं है. बराबर है ना बेटा? डिफॉल्ट में डिडक्शन एग्जाम्शन आएगा क्या? एग्जैक्टली. सर अपने परफेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस. आई होप अंडरस्टूड भाई गिव क्वेश्चंस. चलो कैसा निकालेंगे टैक्स बोलो. अप टू बोलो बेटा. नेक्स्ट 3 lakhs to एट द रेट ऑफ कितना बेटा? 15,000. 6 lakhs to 8,10,000 एट द रेट ऑफ 10%. कितना बेटा टोटल? टू दैट आई विल ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. ऐसा करना चाहिए. समझ में आया क्या? हाँ, कितना आएगा? नहीं 4% कितना है? 1/4. टोटल टैक्स पेबल इज 37,440. How many of you got same answer? Good, majority. Wonderful. Next. करो बाकी का भी फिनिश करो. 3 हो गया. थर्ड क्वेश्चन देखना था क्या? ये देख. सेकंड वाला भी हो गया. क्या है सेकंड वाला आंसर? अच्छा डिफिकल्ट तो नहीं है ना टैक्स कैलकुलेट करना? कुछ भी नहीं. अपने को लिमिट से याद है तो बस हो जाएगा. कुछ भी नहीं है कैलकुलेट करना, बड़ी बात नहीं है. सेकंड क्वेश्चन का क्या सीन है बेटा? इनकम कितना है? डिडक्शन कितना दिया मैंने? ये डिडक्शन लेंगे ना बेटा? ऑप्शनल है ना? एज कितना है? एज क्राइटेरिया बनेगा ना ऑप्शनल में? चलो क्या करेंगे अभी? अप टू up to 2,50,000 the tax is nil. 2,50,000 to 5 lakh at the rate of which comes to 12,500. 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20% which comes to 1 lakh. Greater than 10 lakhs at the rate of at the rate of 30% which comes to 5 lakh 30%, 1 lakh 50,000. Total 2,62,500. But the story does not end there. We have to add something called HEC at the rate of 4%. कितना बेटा ये 4%?
सर आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं देख सकते आप एग्जाम में। एग्जाम में आपको ऐसा प्रेजेंट करना ही है, तो क्लास में भी ऐसे ही करने का, डायरेक्ट कैलकुलेट मत करके मत बैठो प्लीज। क्लास में भी नोट्स में लिखने का ये सब। कितना है? 10,000? 2 लाख? हाँ बस यही आंसर बोले थे थोड़े लोग। कितने लोगों का आया आंसर? 273। गुड, हाफ ऑफ देम। नाइस। बेटा समझ में आ रहा है क्या टैक्स कैलकुलेशन आपको? नहीं पता है वो मुझे, वो मैं हर बंदे पे ध्यान देता हूँ मैं बहुत, वो तो समझ गया, बट एक वर्किंग समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, पूछ लेना कुछ नहीं समझा तो। थर्ड क्वेश्चन देखना है क्या? एक सेकंड। थर्ड वाला भी हो गया, डिफॉल्ट ऑप्शन दोनों हो गया उसमें। मैं थर्ड में दोनों पूछा, दोनों हो गया। गुड। सर डिफॉल्ट में कई सारे डिडक्शंस आते नहीं सर, एक 2-3 डिडक्शंस आएगा बस। अब वो 2-3 क्या आएगा बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दिमाग में ये रख के चलो कि बहुत सारे डिडक्शंस एग्जाम्पशंस डिफॉल्ट में नहीं आएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, बोलो बेटा, व्हाट इज द इनकम? गुड। व्हाट इज द डिडक्शन बेटा? So please do keep in mind that in default, lot of deductions, exemptions will not come. Now what is that which will not come? What is that which will come? We'll talk in detail at the end. End मतलब almost आपको 1 महीने के बाद बताऊंगा मैं, 30 days के बाद बोलूंगा आपको मैं। The reason because I told you the logic, not 40 days. I mean 30 days में आपको बोल सकता मैं वो। क्लास तो हो जाएगा 45-48 डेज के बीच में, बट 30 डेज के बाद बोल दूंगा आपको, क्योंकि सर ये एक एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको बोलूंगा ना मैं, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं, तो क्या होगा एंड में अपने को क्लैरिटी आएगा, ये चैप्टर में ये नहीं आएगा, ये चैप्टर में ये नहीं आएगा, ये चैप्टर में ये नहीं आएगा, तो लास्ट में हम एक समरी बनाएंगे उसका, लिखेंगे क्या डिफॉल्ट में ये सब नहीं आएगा। क्लियर है ना? और जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं कर सकता तब तक बोल नहीं सकता वो। समझे बेटा? बोलो ना यार। वेरी गुड, चलो बोलो बेटा बोलो। Come on, first one side we'll talk about default. If it is default, we'll compute tax on, चलो बेटा बोलो, up to 3 lakhs, 3 lakh to 6 lakh, 6 lakh to 9 lakh, 10%, which is 30,000. 9 lakh to 12 lakh, 15%, which is 45,000. 12 lakh to 15 lakh, 20%, which is above 15 lakh, 30%. क्या बोल रहे बेटा? 11 लाख का 30%, क्या बात कर रहे? 3 लाख 30,000। समझा क्या मैं क्या किया वर्किंग? कितना टोटल? 4 lakhs, हाँ 80,000 बराबर है क्या? H is at the rate of 4%.
5,09,000, sorry, 19,000 है ना वो, 4,99,200. 4,99,200 is the final answer. That's it. Same as everybody? Thank you so much. The other side, my dear friends, let me talk about optional. If it is optional, we'll compute tax on 22 lakhs. Because this 4 lakh deduction, we are assuming that it will come under only under optional. Clear है क्या बेटा? बोलो ना दोस्तों. Everyone sir? चलो. What do we do? Up to 2.5 lakhs ना? 3 lakhs? ऑप्शनल की बात कर रहे हैं हम. ऑप्शनल में 3 लाख कहां से आएगा? एज इज सीनियर 60 एंड अबव. एग्जैक्ट 60, एग्जैक्ट 80, सुपर सीनियर. याद है ना? सुपर सीनियर इज 80 एंड जब तक है जान गुड. अप टू 3 lakhs nil. 3 lakh to 5 lakh 5%, which is 10,000. 5 lakh to 10 lakh 20%, that is 1 lakh. Greater than 10 lakh 30%, which is 12 lakh 30%, which comes to 3 lakh 60,000. बराबर है ना? 4 lakhs. To that we will add HEs at the rate of 4%. कितना बेटा? 18,000. 4,88,800. Tell me, my dear friends, which regime is good for this boy or girl, whatever it is? Optional. So which one is always good? Default or optional? Brilliant. जब तक वर्किंग नहीं करें तब तक नहीं बोल सकते. दोस्तों क्लियर है ना? और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर, अगर ये डिडक्शन 4 लाख की जगह अगर 2 लाख होता, डिडक्शन 4 की जगह 2 लाख होता, 100% डिफॉल्ट में टैक्स कमाता. बराबर है ना? 2 लाख पे 30% लग गया तो 60,000 आ जाता, तो वो किधर तो पहुंच जाता वो. समझ में आ रहा है क्या? तो आप सीधा नहीं बोल सकते डिडक्शन ज्यादा ये तो अच्छा है. ज्यादा मतलब वो भी डिपेंड करेगा कितना ज्यादा. आर वी क्लियर एवरीवन? कैन आई गिव वन मोर लास्ट क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए क्या? चलो 4th क्वेश्चन. मिस्टर डी age 88, income is 45 lakh, 45, and deduction is 4 lakhs under optional. डिडक्शन इज 4 लाख अंडर ऑप्शनल. ठीक है ना? कंप्यूट टैक्स. कंप्यूट ही बोलते सर हम लोग, कैलकुलेट नहीं बोलते. इन इनकम टैक्स वी यूज द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. कंप्यूट टैक्स अंडर डिफॉल्ट, कंप्यूट टैक्स, कंप्यूट टैक्स अंडर डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल. सर मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं सर. क्या नाम है उसका? मिस्टर डी. एज कितना है? इनकम कितना दिया? 45 लाख. डिडक्शन कितना है? वो सिर्फ ऑप्शनल में आएगा. ठीक है? कंप्यूट टैक्स अंडर डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल. चलो सॉल्व करो. 2 minutes. Online student is asking, sir, I didn't understand why you have taken deduction in first question. In first sum you did not take. Wow. Beta, again I'm repeating, I already told you that in case of default tax regime under section 115 BAC, majority deductions exemptions are not allowed. Now what is that which is not allowed, what is that which is allowed, we'll talk in detail separately. But right now you have to keep in mind that
majority deductions, exemptions are not allowed in default tax regime. And the first question I asked you to calculate tax under default. That's why I didn't take that deduction. Second question, I asked you to calculate tax under optional. That's why I've taken that deduction. I'm sure you got it, my dear friend. Done. Some friends are super fast. Good. हो गया क्या? चलो बेटा, डिफॉल्ट में विल कंप्यूट टैक्स ऑन व्हाट फिगर? बोलो बेटा, अप टू 3 lakhs nil, 3 lakh to 6 lakh at the rate of 5%. कितना बेटा? 6 lakh to 9 lakh 10%, which is 9 lakh to 12 lakh 15%, which is 12 lakh to 15 lakh 20%, above 15 lakh 30%. कितना बेटा टोटल? कितना बेटा? 4% is 42,000. Total is 10 lakh. That's it. Sir, आज का क्लियर ऑब्जेक्टिव है, we should become perfect in calculating tax. Computation of tax we should be perfect. चलो, optional. We'll compute tax on which figure? Because majority exemption deduction will not come in default. And what will come, what will not come, we will talk in detail later, not now. Because logic एक simple है. अभी मैं बोलूंगा तो भी दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं. Because उसका पॉइंट्स पता ही नहीं अपने को कैसे जाएगा दिमाग में. दोस्तों क्लियर है क्या? चलो बोलो 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 बोलो, स्टार्ट करेंगे. अप टू, हाँ क्यों? बट उधर तो आप बोले नहीं अप टू 5 lakhs डिफॉल्ट में. डिफॉल्ट में कोई एज क्राइटेरिया नहीं है. क्लियर है ना बेटा? चलो अप टू
5 lakhs nil. 5 lakh to 10 lakh, which is nothing but 1 lakh. About 10 lakh, 30%. 9 lakhs? Oh, 9 lakh 40,000. Sorry, 9 lakh 30 and 1 lakh. 10 lakhs? Good. Optional में कम है tax. H is at the rate of 4%. कितना बेटा? 40? 200. 10 lakhs 71,000. That's it. The whole idea of giving this 3-4 questions or 5 questions, whatever we solved, is all for getting the practice on computation of tax. Did we get some good command and clarity now? अभी कर सकते हैं आराम से, रोज करेंगे ऐसा, 2-3 क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसे, ठीक है? बट अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ इस टैक्स कैलकुलेशन में, और बहुत कहानी है जो अपने बात करने हैं. Are we ready? Everyone? Now listen to the next concept. Listen carefully. Listen very clearly. Listen very carefully. I am talking about something called optional tax regime. क्या tax regime है बेटा? Optional tax regime. What tax regime? In optional tax regime, they gave a wonderful concept. It is there in default also. That also we'll talk. In optional tax regime, they gave a wonderful concept of rebate under section 87A. U by S मतलब पता है ना? Under section 87A. I repeat once again, they gave a wonderful concept called rebate under section 87A. This concept of rebate is only for resident individuals whose total income does not exceed 5 lakhs. Total income does not exceed 5 lakhs. In that case, rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. Tax payable or 12,500, whichever is lower. एक brilliant example लेते, उसके बाद ये concept खत्म. सुनो. So let us say, for example, there is one person, Mr. A, who is paying tax under what बेटा? Optional. समझो बेटा इसका total income 3,50,000 है और इसका एज है बेटा 26 years and is paying tax under optional. टोटल इनकम कितना है बेटा? 3,50,000. बेटा टोटल इनकम जब 3,50,000 है तो टैक्स कितना होगा बेटा? 2.5 लाख तक तो निल. लिखो क्या वापस? 2.5 लाख तक निल. 2.5 से 5 लाख 5%. 2.5 से 5 लाख तो 1 ही लाख है इधर. 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000. लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अरे समझ रहे क्या आप? समझ रहे क्या मेरी बात? ये रेसिडेंट बंदा है सर. दिस पर्सन मिस्टर ए इज अ रेसिडेंट. ठीक है ना? वो रेसिडेंट बंदा है. उसका टोटल इनकम कितना है? 3,50,000. दैट मींस इट डज नॉट एक्सीड 5 lakhs. विल ही गेट रिबेट? यस. हाउ मच इज द रिबेट? Tax payable or 12,500, whichever is lower. So what is the rebate then? 5,000. You should not tell rebate 12,500. I want refund. Refund will not come like that. Refund नहीं आएगा बेटा वैसा. समझ रहे क्या मेरी बात? कितना आएगा रिबेट? 5,000. Net tax figure will be 0. कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा बेटा? जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है उसका टैक्स 0 होगा रिबेट की वजह से. समझ रहे क्या आप मेरी बात? एवरीवन सर, जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है उसको रिबेट की वजह से क्या होगा? टैक्स 0 हो जाएगा. फ्रेंड्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आया नहीं आया? गया ही नहीं कुछ दिमाग में. सर वापस बोल रहा बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम it does not exceed 5 lakh. 5 lakh exact तो भी चलेगा. Law is telling if your total income is not more than 5 lakh, we will give you some benefit.
and that benefit is called rebate, and that rebate will be tax payable or 12,500, whichever is lower. Enjoy the rebate, and if you take that rebate, net effect your tax will become 0. समझ रहे क्या आप मेरी बात? अरे क्लियर है क्या बेटा? बोलो ना यार. अब एक एग्जांपल दूं क्या? और एक एग्जांपल देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगा. रेडी? समझो बेटा, there is one person, Mr. X, who is under optional tax regime. ठीक है ना बेटा? इसका ग्रॉस टोटल इनकम है 8 लाख रुपए. 8 lakhs is gross total income. ठीक है ना? GTI is 8 lakhs and he has got deduction of 3 lakh. नेट कितना है बेटा? अब 8 लाख रुपए कमा रहा है भाई साल का. ये 8 लाख रुपए कमा रहा है और 3 लाख का उसके पास डिडक्शन है, तो नेट फिगर कितना हो गया? 5 लाख. अब आप पूछेंगे सर 3 लाख डिडक्शन मतलब क्या? अरे या तो लाइफ इंश्योरेंस पे किया, या तो मेडिकल इंश्योरेंस पे किया, या तो स्कूल फीस पे किया. स्टूडेंट इज आस्किंग सर बोलो ना हमको, सब कुछ बोलो क्या क्या है उसमें. डिडक्शंस का एक अलग चैप्टर है, तब पढ़ेंगे. वी आर इन फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स. करेक्ट नो? व्हेन वी गो टू अ मूवी, फर्स्ट सम एपिसोड विल कम, some background they'll show, then after that some story will come, then some time pass will come in between, some movies, some songs, some overaction, some comedy scenes, then the real mystery or real thriller will start. Climax will go at peak. Normal movies, some movies will be dangerous, they will start with peak, end with not audible. ऐसा भी रहता थोड़े, ठीक है ना? बट अपना केस नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे 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 जाएगा, पीक पॉइंट पहुंच जाएंगे अपन. ठीक है ना बेटा? तो डिडक्शंस क्या क्या आएगा वो सब अब दिमाग मत चलाओ उस पे. नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन कंप्यूटिंग टैक्स, सो फोकस ऑन दैट. क्लियर नो? लास्ट डे बेटा अगर नहीं बोले ना, मेरा चैलेंज है, तब बात करो मेरे से, सर ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट मिसिंग है, वो मौका भी नहीं दूंगा आपको बोलने के लिए. ठीक है ना? आई विल बेट यू and I'll guarantee you on this, you will definitely be 10 steps ahead in learning the concept. Not one step, 10 steps ahead. That level I'll take you. That's my guarantee. ठीक है ना? आपको 3 दिन में समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो और 2 दिन में समझ में आ जाएगा. Then get back. Mr. X is paying tax under optional. Gross total income कितना है? 8 लाख. डिडक्शन कितना है? नेट फिगर कितना है? ऑप्शनल ही है ना बेटा? समझो बेटा इसका एज 25 ईयर्स है, 25 साल का यंग बंदा है. बोलो बेटा इसका टैक्स कितना होगा? 2.5 लाख तक नील. बोलो ना यार फटाफट. 2.5 लाख तक नील. 2.5 से 5 लाख 5%, which comes to 12,500 less rebate. Rebate under which section बेटा? 87. कितना rebate? Net tax figure is nil. 0. कितना अच्छा सेविंग है यार ये बेनिफिट है नहीं है? क्या हो गया यार? बेनिफिट मिले तो आप कितना दुख क्यों हो रहे यार? 2-3 स्टूडेंट के चेहरे पे दिख रहा है टैक्स क्यों नहीं है, लेना चाहिए ना. अरे यार इट्स ओके यार. यू गॉट दिस लॉजिक नो? इज इट अ बेनिफिट और नॉट? एंड दैट बेनिफिट इज नथिंग बट रिबेट. सर अकाउंट्स में पढ़े होंगे ना, रिबेट मतलब डिस्काउंट है यार. बट टैक्स में आके आप डिस्काउंट मत बोलो. देयर इज नथिंग कॉल्ड डिस्काउंट इन टैक्स. इट इज कॉल्ड रिबेट. ओनली फॉर दोस whose total income does not exceed 5 lakhs. Tax payable or 12,500, whichever is lower. मस्त है ना? बट ये रिबेट जो आपको पढ़ा है मैंने, कौन से केस का पढ़ा है अभी? बट और कोई तो वेट कर रहा है. कौन है जो वेट कर रहा है? एग्जैक्टली. Now let me talk about rebate under section 87A. In case of what बेटा? अब मजा आएगा, मजा आएगा. देखो, in case of default, first point. सर अभी जो पढ़े थे वो क्या था? Rebate in case of optional. अभी जो पढ़ रहे rebate in case of default. This will apply only to a resident individual. उधर क्या था? सेम ही था ना? Wonderful. Whose total income does not exceed 7 lakhs.
अरे उधर 5 लाख भी होता तो मैं से 2 बार क्यों लिखता है यार? उतना टाइम थोड़ी है आप लोगों के पास, मेरे पास। बराबर है ना यार? उस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख। उधर क्या था? इधर क्या है? रिबेट इज इक्वल टू टैक्स पेएबल और 25,000 whichever is lower। कितना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है बॉस। इसलिए पेपर में हेडलाइंस दिए थे लास्ट ईयर, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अप टू 7 लाख इट इज टैक्स फ्री, नो टैक्स रिक्वायर्ड टू पे अप टू 7 लाख। ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में ऐसा चिल्लाए ये लोग, ऐसे चिल्लाए। समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्यों चिल्लाए ऐसा? समझो अभी केस। सर, वन पर्सन, मिस्टर ए, ही इज पेइंग टैक्स अंडर व्हाट बेटा? डिफॉल्ट। समझो बेटा, इसका इनकम है बराबर 7 लाख रुपए, ठीक है ना? 7 लाख पे टैक्स कितना था बोलो? कितने बार भी कैलकुलेट करो आप, 25,000 ही आएगा। आप कितने बार कैलकुलेट करना है कर लो, 25,000 ही आएगा। अरे 3 लाख तक जीरो है यार, 3 से 6 लाख तक 5% है, कितना होगा? 15,000। 1 लाख पे 10% कितना होगा? 10,000। 15 प्लस 10 25। सर इफ यू टेल मी, सर पूरा लिखो ना वापस, आज फर्स्ट डे का क्लास नहीं है बेटा, बराबर है ना? आप बोले तो मैं लिखूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट की बात है, बट यू शुड नॉट गेट यूज टू दैट स्पून फीडिंग। सीए इंटर है ना, फाउंडेशन तक तो ठीक है, बट इंटर में नहीं चलता है वो, ठीक है? कितना है टैक्स? 25,000। वाह, 25,000 टैक्स भरना है? गवर्नमेंट इज टेलिंग डोंट क्राई, वी विल गिव यू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना बेटा? नेक्स्ट फिगर कितना है? बाप रे बाप, क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है यार। इनडायरेक्टली क्या कम्युनिकेट हो रहा है भाई, बोलो? इनडायरेक्टली कम्युनिकेट क्या हो रहा है? जिसका इनकम 7 लाख के अंदर है उसके लिए टैक्स 0 है। समझ रहे आप इनडायरेक्टली बात क्या हो रहा है? सर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहे वो लोग। इनडायरेक्टली एक्चुअली लिमिट क्या है? 3 लाख तक 0, 3 से 6 5, 10, 15, 20, उसके बाद 30, वैसा लिमिट है ना? बट इनडायरेक्टली रिबेट की वजह से क्या हो रहा है? जिसका इनकम 7 लाख के अंदर है उसका टैक्स हो जाएगा 0 बिकॉज ऑफ रिबेट। फ्रेंड्स, एवरीवन, इज इट ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट? समझा क्या बेटा? क्या दोस्त, क्या डाउट है? बोलना दोस्त, पूछना मेरे से। गुड क्वेश्चन। रिबेट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड बिफोर एचईसी। रिबेट हमेशा एचईसी से पहले रिड्यूस करना चाहिए, उसके बाद ही एचईसी ऐड करेंगे। उसके बाद एचईसी ऐड करने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो बन गया 0। डन, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर ऑल्सो। ठीक है सर, क्लियर है क्या? समझे क्या रिबेट? भाई यार, यू फीलिंग सैड? आप इनकम टैक्स ऑफिसर थोड़ी है यार, आप इतना उदास क्यों बन गए? मैं 2 मिनट पहले जब से रिबेट चालू किया, अच्छा नहीं लग रहा सर, हमको टैक्स ही चाहिए हमको। क्या यार? इज इट बेनिफिशियल और नॉट? इज इट गुड और नॉट? सो लेट अस से योर रिलेटिव इज देयर, जिसका इनकम महीने को 50,000 है, साल को कितना है? 60,000। अरे क्या पागल हो गए यार, महीने को 50,000 है, साल को कितना है बोलते 60,000 बोलते क्या यार? क्या मैथमेटिक्स करे नहीं करे फाउंडेशन में यार? या बुलाओ क्या एक बार? महीने को 50,000 साल का कितना हुआ? 6 लाख। वो आके आपसे पूछ रहा है मैं टैक्स कितना भरूं भाई, बोलना। क्या बोलेंगे आप? हाँ, 1 करोड़। क्या बोल रहे हैं यार? व्हाट इज इट? डिपेंड्स। अरे डिपेंड्स क्या है यार? इसमें डिपेंड्स क्या है यार? अच्छा, वो कौन सा रिलेटिव है डिपेंड करेगा। अगर रिलेटिव अपने को पसंद नहीं, हम उसको बोलेंगे टैक्स ज्यादा आएगा। चलो, बाय द वे, जोक से बट, इफ इनकम इज 50,000 पर मंथ, साल का 6 लाख रुपए से, व्हाट इज द टैक्स माय डियर फ्रेंड्स? 0 बिकॉज ऑफ रिबेट, डिफॉल्ट। अच्छा, आप बोल रहे हैं ना डिफॉल्ट, मैं वो डिफॉल्ट वर्ड यूज भी नहीं करूंगा। क्यों बोलूं? अगर किसी बंदे का इनकम 50,000 महीने का है, साल का 6 लाख रुपए है, मैं उसको सीधा बोलूंगा भाई तू डिफॉल्ट में जा, टैक्स 0 कर। वो बोल रहा है 6 लाख रुपए है, 50,000 मेरा डिडक्शन है, 550 नेट फिगर है, मैं ऑप्शनल में जाऊंगा। सॉरी, गाली आ रहे थे तो कंट्रोल कर लिया। समझ गया मेरी बात? सर अगर एक बंदे का 6 लाख इनकम है, 50,000 डिडक्शन है उसके पास, वो बोल रहा है 50,000 डिडक्शन लेके मैं ऑप्शनल में टैक्स भरूंगा,
इतना क्यूट आदमी है क्या तू, ऐसा काम करेगा? क्यूट मतलब वो रिप्लेस कर लो वर्ड आप, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बस you can't be that much true also, no? You should know what to choose. Correct? No, when it is 6 lakh, you have got deduction of 50,000. How can you tell I will take deduction 50,000, go into optional 550 में टैक्स भरूंगा? अरे पागल, तू डिफॉल्ट में गया तो तेरा टैक्स तो जीरो है ना? समझ रहे क्या आप लोग मेरी बात? ये सब नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको नहीं आता इसलिए अपने पास आते हैं। हम उसको बोलेंगे भाई तेरे को टैक्स जीरो है, डिफॉल्ट है, ऑप्शन डिफॉल्ट है, ऑप्शनल है, रिबेट है, बोलता है ऐसा टैक्स जीरो है क्या? तो उसको बोलने का टैक्स जीरो है, मेरा फीस जीरो नहीं है, पैसे रख के जा। अरे बराबर है ना यार, टैक्स जीरो है तो फीस थोड़ा ना जीरो होता है यार। अब इतना मेहनत करके सीख रहे तो फिर उसका रिवॉर्ड भी तो चाहिए। करेक्ट? नो, सिंपल। मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसका टैक्स जीरो है, मैं उसको सीधा बोल देता भाई तेरा टैक्स तो जीरो है पर मेरा फीस तो 5,000 है, वो ट्रांसफर कर। वो बोलता है सर टैक्स तो जीरो है ना, वो तो टैक्स है ना, ये तो मेरा फीस है ना, वो जीरो है तो थोड़ी ना मेरा फीस कम होगा। एक क्लाइंट था ऐसा, मेरे को ये बोल रहा था सर टैक्स जब इतना कम है तो फीस इतना ज्यादा क्यों है? अच्छा बेटा तो अगले साल तेरा टैक्स ज्यादा तो मेरा फीस ज्यादा देगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार कि अपना फीस को टैक्स से लिंक करेंगे। करेक्ट? नो, ब्रिलियंट। आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। कुछ तो बोलो, क्लियर है क्या? एक स्पेशल पॉइंट बोलू क्या इसमें? सुनो बे, वन स्पेशल पॉइंट। व्हाट पॉइंट बेटा? स्पेशल पॉइंट। एंड दिस स्पेशल पॉइंट इज ओनली इन default tax regime. The special point is only in default tax regime. Now, what is that special point? Let's understand. Let's understand by way of an example with numbers. ठीक है ना बेटा? Assume करो बेटा, there is one person, Mr. A. Student is telling, sir, age क्यों ना लिख रहे आप? Age भी तो लिखो ना। क्या फर्क पड़ना है यार तुमको? बराबर है ना? Mr. A. His income is 7,20,000. इतना रिएक्शन क्यों है? अगर 7 लाख होता तो टैक्स कितना होता था? जीरो। क्यों? अप टू 7 लाख नील है क्या? लिमिट में अप टू 7 लाख नील है क्या? नहीं, रिबेट की वजह से टैक्स जीरो हो रहा है। बट ये 720 है तो रिबेट आएगा क्या? नहीं, नहीं। पर अभी कहानी सुनो क्या है, सुनो कहानी क्या है। 7,20,000 पे टैक्स कैलकुलेट कैसा करेंगे? अप टू, मैं लिखता हूं बेटा, एक बार पूरा लिखूंगा मैं, नील। 3 लाख टू 6 लाख कितना बेटा? विच कम्स टू 15,000. 6 lakh to 7.2 lakh 10%, which comes to 12,000. टोटल कितना हुआ? अगर इनकम 7 लाख होता तो टैक्स कितना होता था? इनकम कितना है क्वेश्चन में? 7,20,000। एक्स्ट्रा कितना है 7 लाख के ऊपर? टैक्स कितना आया? भाई तू क्या है भाई इनकम टैक्स? समझ रहे क्या प्रॉब्लम? सर 20,000 इनकम बढ़ने से कभी टैक्स 27,000 बढ़ता क्या सर? समझ रहे क्या प्रॉब्लम क्या है? देन पर्सन स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। ए इज इन कंप्लीट टीयर्स। लूट रहे आप मेरे को, 20,000 एक्स्ट्रा कमाए तो 27,000 थोड़ी ना टैक्स लेके दे हमर से। कितना गलत है ये। गवर्नमेंट बोल रहा है तू रो मत, तू रो मत, तू रो मत। तू क्यों रो रहा है इतना? देन द पर्सन इज टेलिंग, आप कैसा ले सकते मेरे से? जितना कमाया उससे ज्यादा टैक्स कैसा ले सकते हैं आप? ऑफिसर इज टेलिंग, गवर्नमेंट टोल्ड लाइक दिस। आई एम टेलिंग वन कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। गवर्नमेंट इज टेलिंग रो मत। मैंने बोला रो मत। अब तू सुन, सुन मेरी बात पहले, मैं तेरे को बेनिफिट दूंगा। सुन मेरी बात, मैं तेरे को बेनिफिट दूंगा। व्हाट बेनिफिट आई विल गिव यू इज, आई विल गिव यू रिबेट अंडर सेक्शन 87A. 87A. How much rebate I'll give you is 7,000, which will be 27,000 minus 20,000. तो कितना कमाया? 20.
टैक्स कितना आया 27, मैं तेरे को रिबेट दूंगा. कितना रिबेट दूंगा 7,000 रिबेट दूंगा. बैलेंस आ गया 20,000. इस पे ऐड करेंगे HEC 4% 800, 20,800. अगेन ए इज क्राइंग, कंप्लीटली क्राइंग. ये भी तो गलत है ना. 20,000 तो कमाए, 20,000 पूरा का पूरा ले रहे, तो क्या फायदा मिला मेरे को इसमें. गवर्नमेंट इज टेलिंग ये कॉन्सेप्ट जो है ना फायदा देने के लिए नहीं है. ये फायदा है कि तेरे को नुकसान नहीं है. अरे समझे क्या बेटा. ये क्यों हो रहा था, तब से क्यों हो रहा था, ये क्यों हो रहा था. ये कमाया 20, भरना है 27. गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तू इसके लिए रो रहा है ना, एक काम कर 7,000 का रिबेट ले, भर. 20 जितना एक्स्ट्रा आया ना, एक्स्ट्रा पूरा मेरे को दे दे. अब ये बोल रहा है साला पीसर फालतू में कमाया, 7 लाख ही कमाना था. कमाना, मैं को थोड़ी ना बोला तेरे को ज्यादा कमाने के लिए. अरे समझा क्या. एवरीवन सर, गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट सिचुएशन, एक और एग्जांपल. मिस्टर बी, देखो बेटा इसका सीन, और ये भी है डिफॉल्ट में, ठीक है ना. और इसका इनकम है बेटा 7,70,000. 770 पे टैक्स कितना होगा बेटा. 3 लाख तक नील. 3 to 6 5% 15,000. 6 to 770 1,70,000 10% which is 17,000. 15 plus 17 comes to 32,000. बराबर है ना. बोलो एक्स्ट्रा कितना कमाया अपन 7 लाख के ऊपर 70,000. टैक्स कितना आया बोलो. रिबेट अंडर सेक्शन 87A 0. तेरे को लास्ट केस में रिबेट दिए, क्यों दिए, क्योंकि तू रो रहा था. क्यों रो रहा था, जितना कमाया उससे ज्यादा तो टैक्स है. बट इस केस में ऐसा थोड़ी है. 70 कमाया, टैक्स तो 32 है ना. टैक्स थोड़ा इनकम से ज्यादा है. फ्रेंड्स, are we understanding this concept? Are we getting clarity on this? This beautiful concept is given by section 87A, which deals with the concept of rebate. Now, two interesting cases. Let me revise the whole concept once again. In case of optional tax regime, rebate will apply to those whose total income does not exceed 5 lakh, wherein the rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. In case of default, rebate is applicable to resident individual whose total income does not exceed 7 lakh rupees, and rebate is tax payable or 25,000, whichever is lower. One special point in default, even though total income is more than 7 lakh, still rebate will come if tax is more than the extra income. If tax is more than extra income मतलब 7 लाख का ऊपर. समझा क्या लाइन लॉजिक. और एक्स्ट्रा इनकम बियॉन्ड 7 lakhs. सिंपल. आई थिंक वी आर ऑल फुल्ली क्लियर. मजा आ गया बेटा कॉन्सेप्ट ये. तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है बोलो ना बेटा, जिसका इनकम 7 लाख के अंदर है ना, उसका टैक्स डेफिनेटली 0 रहेगा. तो प्रैक्टिकली इनडायरेक्टली पीपल बिलो 7 lakhs आर नॉट पेइंग टैक्स. बट द प्रॉब्लम हियर इज, न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल्स देंगे ये लोग गलत प्रिंट करते. ये लोग सीधा क्या प्रिंट कर रहे हैं मालूम, बेसिक एग्जाम्पशन में जो 3 लाख का है 3 लाख 7 लाख हो गया. अरे पागल है क्या, 3 लाख 7 लाख नहीं हुआ. 3 लाख तो अभी भी 3 लाख ही है. वो रिबेट है. रिबेट अलग है, लिमिट अलग है. करेक्ट है ना बेटा. अगर इनकम 8 लाख है तो आप बोलेंगे क्या 7 लाख तक 0, बाकी 1 लाख पे 10%. अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, वो रिबेट है. Are we fully clear? Everyone, sir? Put the heading in your book. Rebate under section 87A. मजा आ गया कॉन्सेप्ट रिबेट. गुड. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. First point. In case of optional tax regime, it is allowed. In case of optional tax regime, in case of what beta? Optional tax regime, it is allowed only to a
It is allowed only to a resident individual. It is allowed only to a resident individual whose total income does not exceed. It is allowed only to a resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. बराबर है ना? Full stop. Continue. Rebate is tax payable or what beta? 12,500. Tax payable or 12,500, whichever is lower. Tax payable or 12,500, whichever is lower. Done. So clear? Next point. In case of default tax regime, rebate is allowed to resident individual whose total income does not exceed 7 lakhs. Total income does not exceed 7 lakhs. Full stop. Continue. Rebate is tax payable. Rebate is tax payable or 25,000. Rebate is tax payable or 25,000, whichever is lower. हो गया लिखना. Tax payable or 25,000, whichever is lower. Third point, ये special point है, उसको star mark लिखना. In case of default tax regime, rebate is allowed even though total income is more than 7 lakh. Rebate is allowed even though total income is more than 7 lakhs. If बोलो बेटा क्या लिखेंगे, बोलो आप लोग बोलो. If tax payable, no, बोलो पूरा बोलो पहले. If tax payable is more than income beyond 7 lakhs. समझे क्या? If tax payable is more than income beyond 7 lakhs. समझे क्या language? If tax payable is more than income beyond 7 lakh. सर सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए कहानी इतना ही है कि भाई अपना इनकम जो कमाए एक्स्ट्रा उससे टैक्स ज्यादा आ रहा है तो रिबेट भी मिलेगा, तभी भी ज्यादा नहीं आ रहा तो नहीं मिलेगा. सिंपल. क्लियर है? सर ये 2 एग्जांपल्स तो ले लो ना प्लीज. एक एग्जांपल ले लो. ये एग्जांपल लिखना.
हो गया लिखना? ये भी एक ले लो प्लीज, सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 करके लिखो बेटा। प्लीज टेक दिस एज एग्जाम्पल 2। नहीं वो जरूरत नहीं, ये ले लो। हो गया? ये लास्ट एग्जाम्पल ये भी लिखना है आपको, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस केस में इनकम 7 लाख के ऊपर है, बट टैक्स इज मोर देन योर एक्स्ट्रा इनकम। So done? That's it. Let's take a break. After break, we'll talk more. Thank you.
Yes, get back my dear friends, come on. Rebate is dealt by which section? Rebate is dealt by which section? 87A. In case of optional tax regime, क्या है बेटा आंसर? It will apply only to those resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. कितना बेटा rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. If it is default, up to 7 lakhs, and tax payable or 25,000, whichever is lower. दोस्तों बराबर है ना? अगर 7 लाख से इनकम ज्यादा भी है तभी भी रिबेट आ सकता है अगर tax payable is more than your extra income beyond 7 lakhs. दोस्तों clear है? Everybody, are we clear till this point what we discussed so far? Good. Tell me my dear friends, what is section 172? Shipping business of non-resident. 174. Persons leaving India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. 175. Person likely to transfer property to avoid tax. 176. Discontinued business. दोस्तों यहाँ तक सबको क्लियर है? Everyone sir? Good, fair enough. And how do we calculate gross total income? We will combine all 5 heads of income. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. Once we combine the 5 heads of income, what we get is called gross total income. And from that gross total income, we reduce what? Deductions under chapter S6A. Then the balance what we get is called total income. On that total income, we will calculate what is the tax payable. Beta bolo? Good, fair enough. Chalo. Now listen my dear friends. Let me talk about some interesting concept called special tax rates. क्या है बेटा? See, there is something called surcharge also. Apart from normal tax, there is something called surcharge also, which I'll teach you separately. After some time I'll teach you. Once we complete this, then we'll talk about that surcharge. Clear my dear friends? क्या नाम है इसका? बोलो बेटा. Special tax rate. Listen very clearly about the special tax rates, my dear friends. Listen. So what are the 5 heads of income we have? Tell me once again. Salary, house property, PGBP, capital gains, other sources. बराबर है ना? अब सुनो special tax rates क्या है? We are talking about something called capital gains. What is that we are talking, my dear friends? In capital gains, my dear friends, there is something like this that is called long term. Other one is called short term. Now you might get one doubt, sir, what is long term, what is short term? In some cases, if we hold the asset for more than 12 months, it is called long term. Less than 12 months, it is short term. In some cases, more than 24 months, we call it long term. Less than 24, we'll call it short term. Some cases, more than 36 months. Different case, we have different answer. We'll talk in detail when we go to chapter called capital gains. Anyways, to give a small example, हम जब online में shares खरीदते, let's say I purchase Reliance shares online, listed shares. If you hold it for more than 12 months, we call it as long term. Less than 12 months, we'll call it as short term. आप लोग सुने क्या ये word long term, short term? कहाँ पे सुने? अकाउंट्स में आया, अच्छा लॉ में आया, ठीक है, जो भी है वो सब, वो लोग तो टैक्स रेट तो नहीं बताए ना आपको, हाँ वो मैं बताऊंगा, ठीक है. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बट एनीवेज इन अकाउंट्स यू वुड हैव हर्ड अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, which is called current investment, non-current investment, but that is not my criteria. My criteria is only about long-term capital gain, short-term capital gain. अब सुनो बेटा कहानी. Long-term capital gain is taxable at the rate of 20% under section 112. As per section 112, long-term capital gain is taxable at what rate, my dear friends? 20%. मतलब इसको slab rates नहीं है. Normally अपना slab rates है ना बेटा.
2.5 लाख थे कितना, 2.5 से 5 इतना, 5 से 10 इतना, 10 के ऊपर इतना, वैसे स्लैब रेट से ना, व्हाट डू यू कॉल देम? स्लैब रेट. But here it is not a slab rate. Here it is directly 20%. Directly 20%. So getting clarity? But other side, the real fun. What is that? Listen carefully. Once I complete this concept, I'll give an example with the numbers so that full clarity will come. Don't worry. जब तक टेंशन मत लो. उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से. ठीक है? क्लियर ना बेटा? वही चल रहा है दिमाग में. देख लो. Taxable at what rate? 20%. Under which section, my dear friends? 112. Other side, long-term capital gains on sale of equity shares. I'm sure you know what is equity share. Bola beta. On sale of equity shares or units of EOMF. EOMF stands for Equity Oriented Mutual Fund. I repeat once again, my dear friends. EOMF stands for क्या है बेटा वो? Equity Oriented Mutual Fund. We know what is mutual fund, no? क्या? Subject to market risk. Read all documents carefully. वही है क्या? अरे समझा ना यार आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है? Why mutual fund is subject to market risk? Why? Tell me. Simple. Whatever money we put in mutual fund, they give us what? Units. They don't give a share because they are not doing business. वो पैसे से वो लोग क्या कर रहे? इन्वेस्ट कर रहे. प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट देंगे, लॉस आए तो लॉस देंगे. सब्जेक्ट टू व्हाट रिस्क? मार्केट रिस्क. Correct, no friends? Now what is that word I wrote here? Equity oriented mutual fund. Sir, mutual fund में two types होता है. One is called equity oriented mutual fund. Other one is called debt oriented mutual fund. If you understand what is equity oriented, it is sufficient. Because debt oriented means other than equity oriented. A public company, private company. Ah, wonderful. Same logic. Come on, see. What is an equity oriented mutual fund? Listen. Two possibility. Possibility number one. Mutual fund which invest at least 65% of total proceeds in equity shares of, in what, sir? Equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange. Recognized stock exchange मतलब क्या है? Example? NSE, BSE, simple boss. We know the stock exchange, no? So मतलब क्या हो रहा है? शिव तेजा is investing money in mutual fund. वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास जितना भी पैसा आया उसका at least 65% they are investing in equity shares of domestic company. Then that fund is called equity oriented mutual fund. वो फंड को क्या बोलेंगे हम? Equity oriented mutual fund. समझ रहे क्या बेटा? This is one possibility. But there is one more possibility for equity oriented mutual fund. That is, mutual fund is investing at least 90% of total proceeds in another mutual fund listed on recognized stock exchange. And that another mutual fund, and that what beta? That another mutual fund is investing 90% of total proceeds in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange. So I'll give a small example so that full clarity will come. Sir, there is Shiva Teja. Listen very clearly, my dear friends. There is Shiva Teja. There is mutual fund. There is what, my dear friends? Mutual fund.
I'm investing money in mutual fund. Correct, my dear friends? And this mutual fund is directly investing greater than or equal to 65% in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange. Listed on what बेटा? Recognized stock exchange. समझ रहे क्या बेटा? ये एक पॉसिबिलिटी है. ये म्यूचुअल फंड को क्या बोलेंगे वो टाइम पे? दिस म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. ये डायग्राम समझ में आया सबको? ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा एक स्पेशल पॉसिबिलिटी है. क्या है वो स्पेशल पॉसिबिलिटी? शिवतेजा पैसा डाला किसमें? म्यूचुअल फंड. दिस म्यूचुअल फंड is investing in another mutual fund greater or equal to 90%. And again this mutual fund is buying equity shares of domestic company listed on stock exchange greater or equal to 90%. Then also this is called equity oriented mutual fund. So in order to call, in order to regard, in order to classify, in order to specify, in order to mention, in order to categorize, whatever English language you want to use. But in order to treat a mutual fund as equity oriented mutual fund, it must invest at least 65% in equity shares of domestic company. That is one possibility. Second possibility, this mutual fund is investing in another mutual fund at least 90%. And this mutual fund is again investing at least 90% in equity shares of domestic company. दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, then that mutual fund is called equity oriented mutual fund. You might ask, 65% से कम में तो debt oriented mutual fund, 90% से कम में तो debt oriented mutual fund. So there are only two ways how we can raise money, no? Either it is equity or it is debt. Equity fellow is an owner, debt is like a loan. Debt पे interest देते, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते. अरे मैं क्या समझा उसमें, वो तो बेसिक पता है आपको. दोस्तों, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स बोथ आर सेम. व्हाट इज द डिफरेंस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट ए ओनर. इक्विटी फेलो इज ओनली एन ओनर. प्रेफरेंस शेयर इज वेरी सिमिलर टू डेट, बट द ओनली पॉइंट इज द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे हैव ए प्रेफरेंस ओवर इक्विटी. उसके लिए उसका नाम है प्रेफरेंस. यू हैव गॉट मोर प्रेफरेंस कंपेयर टू इक्विटी. इक्विटी वाला लास्ट है, सब खत्म होने के बाद कुछ बच गया तो वो लेके जाते, बिकॉज दे आर द ओनर्स. सर आई होप यू नो व्हाट इज इक्विटी डेट. करेक्ट? नो, वो समझाने की जरूरत नहीं है ना. ये समझा क्या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता? फ्रेंड्स, स्टूडेंट इज आस्किंग, ये सब क्यों पढ़ा है आप? क्योंकि ये टेबल कंप्लीट करना है तो अपने को समझना है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है क्या, उसके लिए वो सब पढ़ाया. समझ रहे क्या? चलो गेट बैक. Long term capital gain generally taxable at what rate? 20%. Under which section? 112. Right side you see. Long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust or units of what beta? Business trust. Classic example of business trust, I don't know whether you heard that word or not, there is something called REIT, Real Estate Investment Trust. शायद पेपर में या कहीं तो आप सुने होंगे वो नाम. अगर नहीं भी सुने तो मैं आपको समझाता हूँ. सर लिसन, I'll give a small example. So your good name? Abdullah. See, let's say one of our friend Abdullah, he wants to buy a property. The property value is 2 crore. Property value is, and he is having 20 lakhs with him. But he wants to buy a property worth 2 crores. Is it possible? Speak out. But there are people called Real Estate Investment Trust. REIT, Real Estate Investment Trust. What this trust to do is, they'll pull money from people. They'll pull money from people who are interested to buy real estate property. जैसा अब्दुल्ला है वैसे 4-5 लोग रहेंगे ना जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, उन सब से मैं पैसे लूंगा और वो पैसे लेके जाके I'll buy the property. Whatever rent is coming from the property, I'll distribute it to all of them according to their investment. Now directly or indirectly, he became owner of some part of the property, no? Speak out. That is called Real Estate Investment Trust. When you read newspaper sometime,
इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस वर्ड्स विल कम. ठीक है ना बेटा? सर आप लोकल न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते बैठेंगे तो ये सब नॉलेज नहीं बढ़ेगा. आई एम टेलिंग यू, लोकल न्यूज़पेपर और एनी लोकल रीजनल लैंग्वेज, I don't know in Marathi which paper is more popular here. Lokmat, is it? Anyways, those all papers are only for getting some knowledge on politics, what is happening outside here and there. But to get some business knowledge, papers like Business Standard, Times of India, Economic Times, they'll only give good knowledge about what is happening outside. स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा कंपनी का क्या चल रहा है, सब कुछ उधर ही आएगा न्यूज. करेक्ट नो? व्हेन यू वॉच टीवी, समटाइम्स वॉच CNN, IBN, टाइम्स नाउ, you will get some knowledge. ठीक है ना बेटा? I'm not telling you रोज वही काम करो, but sometimes when you're free, you're watching something, watch these kind of programs, you will get a lot of knowledge. क्लियर है ना बेटा? ये सब टाइम पास, दिया और बाती, क्या करना है अपने को? क्या करना है अपने को उनसे? कुछ टाइम काम नहीं है वो. अगर मतलब जिंदगी में कुछ काम नहीं है आदमी के पास, फिर देख रहा है तो अलग बात है. बराबर है ना? ये सब स्टार प्लस, सोनी, ये सब टाइम पास सीरियल्स, एपिसोड्स हम देखते रहेंगे. फिर उनको अरे क्या ड्रेस पहना है यार, क्या डांस है यार, वाओ सो क्यूट. अपने को क्या करना है यार? अपने को क्या रिलेवेंस है उससे? फन कभी कभी इट्स ओके, बट इट शुड नॉट बी ए डेली प्रोसेस. करेक्ट नो? गेट बैक. सम पीपल आर कनेक्टिंग क्लोजली टू दैट सीरियल्स. क्या तो सीरियल्स देखते हैं आप लोग? उतना टाइम है क्या आप लोगों के पास? हाँ, थैंक यू सो मच. आप लोग क्या कर रहे हैं रोज शाम में? क्या? पोगो? पता नहीं भाई आपका पोगो क्या है. चलो गेट बैक. ओके ओके, लेट्स गेट बैक. चलो काम पे आ जाते हैं वापस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट, व्हाट रेट नॉर्मली? 20%. विद सेक्शन 112. बट राइट साइड क्या लिखा मैंने? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. डू वी नो व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? यस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. पता है ना बिजनेस ट्रस्ट का मतलब क्या है? जानते हैं ना अभी दोस्तों? और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. एग्जांपल NSE, BSE. बराबर है ना? थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच STT is paid. So whenever you buy and sell securities on stock exchange, you are required to pay something called STT. प्रैक्टिकली पे करने का कोई पॉइंट ही नहीं आता, बिकॉज आपने कुछ अगर सेल कर दिया, वो पैसे काट के बैलेंस देता है आपको. STT स्टैंड्स फॉर है, नॉट शिवतेजा, STT इज फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. नहीं सुने कभी ये? अच्छा, मतलब स्टॉक मार्केट का कोई अंदाजा भी नहीं है अपने को. सिर्फ इतना पता है कि इंडिया में BSE है, NSE है. कहाँ पे BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अच्छा, वेरी गुड. NSE कहाँ पे? दिल्ली. कोई कंपनी अगर BSE में है, वो NSE में भी रहता है क्या? दो जगह लिस्टिंग हो सकता है क्या? अरे हो सकता है यार. ठीक है, एनीवेज. सर, STT स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स that is required to be paid when you buy listed securities. Clear na? अब पढ़ो, लाइन पढ़ो, come on. Long term capital gains on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust. Check करो. Yeah, or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid, is taxable at the rate of 10% on amount. Come on, my dear friends, come on. At the rate of what, beta? 10% on amount exceeding 1 lakh. It is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh.
1 लाख इज नॉट पर शेयर, 1 लाख पर एनम. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,30,000 1,30,000 आया, आपको 1 लाख पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 30,000 पे टैक्स भरना है. गेटिंग माई पॉइंट? और 30,000 पे कितना परसेंट भरना है? दैट्स इट, दैट्स इट. यू माइट थिंक सर क्यों ऐसा अलग अलग रेट क्यों है? सर बिफोर 2018 से पहले एक टाइम पे ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट था, मतलब इसके ऊपर टैक्स था ही नहीं. गवर्नमेंट ने अचानक आके बोल दिया अब इससे टैक्स करेंगे इसको हम लोग चिल्लाना चालू कर दिए. द गवर्नमेंट टोल्ड डोंट क्राई, वी विल आस्क यू टू पे टैक्स ओनली ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, दैट टू 10%. छोटा ही है ना, दे दो. गेटिंग क्लैरिटी? एवरीबॉडी सर, बोलो बेटा. And this concept, whatever I wrote here, is all given by a brilliant section called 112A. What is section 112? 112, long-term capital gain generally taxed at 20%. Correct, no? What is 112A? Ab bolo. Chalo, let's sing the song. Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. तो देखे तो क्या आएगा बेटा? बोले तो आएगा ना. Please participate when I'm revising. सर whenever I'm revising, no, one small point I will tell. मेरे को एक्चुअली सब कुछ याद है, मैं रिवाइज मेरे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा, तो प्लीज पार्टिसिपेट इन द रिविजन. ओके नो? कम ऑन. व्हाट इज सेक्शन 112? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली टैक्स्ड एट 20%. व्हाट इज सेक्शन 112A? Long term capital gains on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding. कितना brilliant concept है. मतलब for example my dear friends, I'll give a small practical example which is my case only. Okay, one pharma company shares last year I purchased at a price of 950 per share. 950 per share. 12 महीने के बाद last month only I sold it for 1340 per share. बढ़ गया यार, अच्छा बढ़ गया. कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी लॉस भी आता है. ठीक है ना, वो भी होता है, ये भी होता है. ठीक है ना बेटा. प्रॉफिट की बात कर रहा हूं क्योंकि गेन टैक्स की बात कर रहे हैं ना. अब लॉस बताएंगे अच्छा नहीं दिखता अभी. ठीक है. नाउ टेल मी, इज दैट गेन टैक्सेबल? यस, बट आई डिड नॉट पे 1 रुपी टैक्स ऑल्सो. क्योंकि मेरे पास था 200 शेयर, आया कैपिटल गेन 80,000 रुपीज, और पूरा साल में कुछ और कैपिटल गेन है ही नहीं मेरे पास, और वो लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म है यार, शेयर्स बेचा यार, कैपिटल गेन आया यार, और पूरा साल में कितना आया मेरे को? सिर्फ 80,000. एक्ट ने क्या बोला? 10% टैक्स. किसके ऊपर? अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख. मुझे आया कितना? तो टैक्स 0. समझा क्या? स्टूडेंट इज टेलिंग सर मुझे एक डाउट है. बोलो ना सर प्लीज. आई एम टेलिंग, बोलो ना बेटा. स्टूडेंट इज टेलिंग सर समझो मैंने शेयर आज परचेस किया, 4 महीने के बाद बेच दिया, तो क्या होगा सर? 10% लगेगा. उसको लॉन्ग टर्म बोलते क्या? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा सर? रुको ना जरा, आएंगे उधर. क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया क्या अभी? बोलो ना यार. एवरीवन, दिस आर ऑल कॉल्ड व्हाट रेट्स? स्पेशल टैक्स रेट्स. चलो अब क्या बच गया इसमें? शॉर्ट टर्म. व्हाट टर्म? शॉर्ट टर्म. लेट मी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म. देखो बेटा भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 15%.
सर सेम ही है तो सेम एज बिलो नहीं, सेम एज साइड कुछ तो लिखता था ना, इतना पूरा थोड़ी लिखता था मैं। तो समझ में आया क्या? इसमें आपको 2 पॉइंट ऑब्जर्व करना है। पॉइंट नंबर 1, हियर इट इज 10%, देयर इट इज 15%। पॉइंट नंबर 2, 10% is only on amount exceeding 1 lakh, but 15%, even if it is 1 rupee also, pay 15 paisa. समझे क्या? Everybody, sir? And this beautiful concept is given by section 111A. ये क्या था? 112A. वो क्या है? वो ये नहीं है, ये वो नहीं है, वो वही है, ये समझ। वेरी गुड, गुड, वंडरफुल। सर क्लियर है क्या बेटा? बोलो ना यार। चलो बेटा एक बार रिवाइज करते पूरा का पूरा, ठीक है? चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल का जनरल रेट क्या है? 20%। किसने बोला? सेक्शन 112। व्हाट इफ इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एसटीटी इज पेड विल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग। अब मैं जैसा बोला ना वैसा आप लोग भी बोलो एक बार। क्या? बस हो गया क्या? म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding. Same case, if it is not long term, it is short term, taxable at the rate of 15% on amount exceeding 0. समझा क्या? कुछ तो बच गया। दैट इज लास्ट कैटेगरी। अगर शॉर्ट टर्म ये स्टोरी नहीं है, दूसरा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सुनो भाई, लास्ट पॉइंट, एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। व्हाट इज दैट लाइन सर? एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स we will tax at normal rate. Will tax at what rate बेटा? Normal rate. प्लेस नहीं है इसलिए एडजस्ट कर दिया उधर। Will tax at what rate? Normal rate. Student is asking, normal rate क्या होता सर? आप लोग बोलो क्या होता normal rate? Normal rate क्या होता? जो स्लैब रेट है, डिफॉल्ट में है तो 3 लाख, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, एबो 12, सॉरी 12 से 15, उसके एबो 15। डिफॉल्ट में, ऑप्शनल में तो एज देखो, 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10, एबो 10, 60 एंड एबो है तो अप टू 3, 3 to 5, 5 to 10, एबो 10। अगर सुपर सीनियर है तो अप टू 5, 5 to 10, एबो 10। समझे क्या? एवरीवन सर? स्टूडेंट इज टेलिंग सर 3 पॉइंट का आप सेक्शन नंबर बोले, लास्ट पॉइंट का सेक्शन नंबर क्यों नहीं बोले आप? अरे नॉर्मल रेट है यार, नॉर्मल रेट कहां पे दिए? अगर डिफॉल्ट वाला है तो 115 बीएसी, डिफॉल्ट नहीं ऑप्शनल है फाइनेंस एक्ट, तो मैं इसका क्या सेक्शन नंबर अलग बोलूं यार आपको? सर हर चीज का पीछे लॉजिक है यार। मेजॉरिटी थिंग्स हैव गॉट अ लॉजिक, फ्यू थिंग्स आर इलॉजिकल बट मेजॉरिटी थिंग्स विल हैव अ लॉजिक। क्लियर ना? समझे क्या एवरीवन सर? अब एक मस्त क्वेश्चन लेते, उसके बाद इसका पूरा क्लैरिटी अपने को आ जाएगा। रेडी एवरीवन? चलो सुनो, अभी ध्यान से सुनो बेटा। क्या हुआ? कैन आई प्रोसीड? लिसन, 1% मिस्टर राहुल, नाम तो सुने होंगे? नहीं, ठीक है। राहुल, एज 45 years, he has got salary income 30 लाख रुपए, ठीक है ना बेटा? एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एसटीटी पेड 4 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग बेचा बेटा,
10 लाख रुपए आया उसको, ठीक है ना बेटा? समझ रहे क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पेड, लेट्स से 1 लाख, एंड राहुल इज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उसको लगता है कि भाई डिडक्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं डिफॉल्ट में ही टैक्स पे करूंगा. ठीक है भाई, तेरी मर्जी, बनाई थोड़ी है, तेरी मर्जी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट व्हाट बेटा? टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर. क्लियर है? चलो बेटा, कैसे करेंगे टैक्स कैलकुलेशन बोलो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टोटल इनकम कितना है बोलो बेटा? 30 लाख, 4 लाख, 45 लैक्स. दोस्तों टोटल इनकम कितना है? आउट ऑफ दैट 45 लैक्स माय डियर फ्रेंड्स, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑन लॉन्ग टर्म, ऑन इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पेड, कितना है फिगर वो? 4 लैक्स. बराबर है ना बेटा? बोलो. 3 लाख, presentation I'll show, presentation. 4 lakh minus 1 lakh into 10%, which comes to 30,000. वर्किंग समझा क्या? बोलो ना बेटा. नेक्स्ट फिर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. बराबर है ना? कितना है सेल ऑफ बिल्डिंग? फ्रेंड्स प्लीज रिप्लाई, डोंट सिट लाइक दैट. लॉन्ग टर्म सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है बेटा? 10 lakhs. तो क्या करेंगे? 10 lakhs इंटू 20%. वाई? विच सेक्शन? 112. 112 ए नहीं आएगा ना? 112 ए कब आएगा? इफ इट इज इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. अगर वो तीनों भी नहीं है तो 112 ए नहीं आएगा बेटा, तो 112 ही आएगा. अगर 112 आया तो टैक्स रेट कितना है बेटा? 20%. आई बिलीव दैट वी आर गेटिंग क्लैरिटी. समझ में आ रहा है सबको? कितना है बेटा फिर? 2 lakhs. समझा क्या? नेक्स्ट, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पेड. कितना है बेटा? कितना दिया मैंने क्वेश्चन में, याद नहीं है क्या? कितना दिया क्वेश्चन में? 1 लाख. तो क्या करेंगे बेटा बोलो? स्ट्रेट अवे 1 लाख इंटू 15%. क्यों? सेक्शन 111A विच इज 15,000. समझ रहे क्या बेटा? बोलो ना यार प्लीज. नाउ टेल मी, व्हाट इज द बैलेंस इनकम? टोटल इनकम कितना है? टोटल इनकम 45 लाख है. 45 लाख में हम 4 लाख पे टैक्स निकाल दिए, 10 लाख पे टैक्स निकाल दिए, 1 लाख पे टैक्स निकाल दिए, तो कितना खत्म हो गया? अभी 15 लाख खत्म हो गया. क्या हुआ? 30 बाकी है. बराबर है ना? 15 लाख खत्म हो गया ना? समझ चले 1 लाख तो माइनस करें ना आप. अरे माइनस करें बोलता है, सेक्शन ही बोलता है माइनस करो. बराबर है ना? चलो बचा कितना इनकम? 30 lakhs. आर वी अंडरस्टैंडिंग? ऑन दिस 30 lakhs वी विल अप्लाई स्लैब रेट्स. आई थिंक मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? बराबर है ना? स्लैब रेट मतलब क्या, वो सब अपने को पता है क्या करना है. बोलो फटाफट बोलो बेटा. अप टू 3 lakhs nil, 3 lakh to 6 lakh 5%, which is 15,000. 6 lakh to 9 lakh 10%, which is 9 lakh to 12 lakh 15%, 45,000. 12 lakh to 15 lakh 20%, 60,000. Greater than 15 lakhs 30%. 4 lakhs कितने?
6 lakhs. समझा क्या दोस्तों? Now tell me what is the total tax before HEC? HEC याद नहीं करना अभी तक? टोटल टैक्स क्या है बेटा बोलो? एक तो 30,000 बोलो, 30,000 प्लस 2 lakhs प्लस 15,000 प्लस 6 lakhs, 8 lakhs. Total tax before HEC is 8 lakhs 45,000. Sir, what you have to understand is that in income, if there is some income which is taxable at special rate, उसको अलग करके उस पर स्पेशल रेट निकालेंगे, बैलेंस के ऊपर स्लैब रेट निकालेंगे, फिर टोटल लेंगे, फिर सेस ऐड करेंगे. समझ रहे आप लोग? बेटा बोलो ना यार प्लीज. एवरीवन, सबको क्लियर है क्या ये कहानी हम क्या कर रहे हैं? क्यों इसको अलग अलग करें ऐसा? क्योंकि इनका स्पेशल रेट से, स्पेशल रेट वालों को तो अलग करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स. एवरीवन, चलो क्या ऐड करना है अपने को? वी हैव टू ऐड HEC एट द रेट ऑफ 4%. कितना है 4%? 33,800. बराबर है क्या? नेक्स्ट 8 lakhs. That's it. That is how we solve this question. Clear, my dear friends? So there is a capital gain. This is how we have to bifurcate that special rate of income. Take separate tax, not separate tax. Other side calculate normal tax. दोनों का टोटल ले लो, फिर से ऐड करो. सबको दिमाग में जा रहा है ना ये पॉइंट? Sure, my dear friends? Please do reply all of us. Excellent. Let's write. Put the heading special tax rates. Put the heading special tax rates. स्पेशल टैक्स रेट. चलो ये टेबल बनाना है. कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. प्रिपेयर दिस टेबल. लास्ट में थोड़ा स्पेस एडजस्ट कर लो. मुझे स्पेस नहीं था उधर तो मैं एडजस्ट कर दिया, बट आप बराबर ड्रॉ करो. ठीक है ना? ये टेबल बना दो.
सर हो गया? चलो बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरली टैक्स एट व्हाट रेट? 20%. Which section? 112. Correct? No? What if it is long term capital gain on sale of equity shares or units of what beta? Equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. It is taxable at what rate beta? 10% on amount exceeding 1 lakh. सेम केस अगर लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म होता बेटा, टैक्स रेट क्या है बेटा? 15%. और दूसरा कोई अगर शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल रेट, नॉर्मल मतलब स्लैब रेट. डन. ये भी लिखना है अपने को, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. लिख लो बुक में, याद रहेगा. इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है लिख लेना प्लीज. They're directly invested in equity shares, then it is at least 65%. If they put in another mutual fund, then 90%. And that mutual fund again 90% in equity shares. And equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange. Domestic company listed on recognized stock exchange. चलो डन. ये डायग्राम की जरूरत तो नहीं है ना? आपको ये भी ड्रॉ करना है या समझ में आ गया? ड्रॉ करना है कर लो. आई वेट 2 minutes, नो प्रॉब्लम. इसको ड्रॉ करना है करो, 2 मिनट वेट करूंगा.
डन? चलो एग्जाम्पल लिखो बेटा. I want this example in your book. Please take the example.
हो गया बेटा? दोस्तों हो गया क्या? एक नोट लिखना बेटा नीचे. Write one note. In case of equity shares, in case of equity shares, in case of equity shares under section 112A, in case of equity shares under section 112A, comma, STT. What is that STT beta? Securities Transaction Tax. Correct na? STT should have been paid. STT should have been paid. STT should have been paid at the time of STT should have been paid at the time of purchase and sale. At the time of purchase and what beta? Sale. Full stop. In other cases, comma, STT should have been paid. In other cases, comma, STT should have been paid. In other cases, STT should have been paid at the time of sale. STT should have been paid at the time of what beta? Sale. बेटा समझा क्या लैंग्वेज है? ये क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर से तो परचेस के टाइम पे एसटीडी भरना चाहिए, सेल पे भी एसटीडी भरना चाहिए. अगर वो म्यूचुअल फंड का सीन है, अगर सिर्फ सेल पे भरे तो काफी है. फ्रेंड्स क्लियर? एवरीवन, सबको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? चलो, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व वन क्वेश्चन, बट बिफोर दैट 1-2 more special points I'll tell, then we'll solve one question. That is like this. There is one brilliant section called 115BB. What is the section number beta? 115BB, which says in case of winnings from lottery, betting, gambling, horse racing, card games, or any other games of such sort. Don't tell cricket, basketball and all. They are all sports. They are all not games. अरे समझे क्या? See the story. Betting, gambling, lottery, horse race, card games. So पता है ना card games, horse racing, lottery. In all these cases, my dear friends, law clearly told straight away taxable at the rate of 30%. 30%, that too flat. What is it 30% flat? That means what? आप ये नहीं बोल सकते मैंने हॉर्स रेस में मेरे को करोड़ रुपए आया, पर मेरे को जाने के लिए आने के लिए 10,000 खर्चा हुआ, उधर खाना खाया 5,000 रुपए का. ये सब नहीं बोल सकते आप. जितना कमाए सीधा टैक्स पे कर 30%. समझे क्या? These are technically called as casual incomes. What do we call that beta? Casual incomes. Betting, gambling, lottery, crossword puzzles. Crossword puzzles सुने ना? Crossword puzzles. What is crossword puzzle example? सुडोकू बेटा, सुडोकू. सर सुडोकू पेपर में आता है ना? 30% टैक्स. सब एक बात बोलूं क्या? कौन बनेगा करोड़पति? When that game is being played, when that game is being played, suppose one person has got 1 crore, then Amitabh Bachchan will tell, computer Mahashay, then he will tell, 1 crore रुपए कमाए. And then he will shout and all, what do you call, flowers will fall, all that will happen. Then they'll show one check being given at 1 crore. Correct, no? Camera cut, they'll take back that check and give 70 lakhs check. 30% to tax ही गया. ऊपर से there is something called surcharge and all, which I'll teach you in next class. Don't worry, not now. ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलना बेटा.
बोलने के लिए बोलते 10 करोड़ रुपए आए, 4 करोड़ तो टैक्स ही गया। कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे क्या? Winnings from betting, gambling, lottery, crossword puzzles, card games, all these cases, what is the tax rate? Flat 30%. Last year एक नया सेक्शन आया जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 115 BBJ, BBJ, which talks about net winnings from online games. ऑनलाइन गेम्स बेटा, आजकल ऑनलाइन गेम्स बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, क्या है वो? जंगली रम्मी। हाँ, नहीं है, वैसा है बहुत सारे सर, आजकल बहुत सारे। when we watch some videos also, that ads keep coming, जंगली रम्मी, लूडो। लूडो पता है ना? लूडो नहीं खेलते आप लोग कभी? हाँ, ठीक है। सो इन ऑल दिस ऑनलाइन गेम्स ऑल्सो टैक्स इज 30%, भरोसे दिया 30%। सर क्लियर है क्या? एवरी वन सर, पक्का? चलो, टेक दिस 2 sections, then I'll give one question, you solve. With that we'll complete our class today. चलो लिखो first, what I'm telling that you write. Come on, put the heading section 115 BB. Section 115 BB. Title, tax on casual incomes. Tax on what beta? Casual incomes. Tax on casual incomes. Clear? Write down. In case of winnings from betting, comma gambling, winnings from betting, gambling, lottery, comma horse racing, comma card games, or any other games of such sort, then they are taxable. Directly at 30%. Then they are taxable directly at 30%. दोस्तों क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, in case of net winnings from online games, comma, they are taxable at 30%. Bracket section 115 BBJ. So clear है everyone? चलो, I have one question, let us solve. Compute tax liability of Mr. A, age 35 years, from following information. For assessment year 24-25. वही है ना अपने एग्जाम के लिए? बेटा बोलो, अपने एग्जाम के लिए PY 23-24, AY 24-25, बराबर है ना? चलो, total income is 41 lakhs. Out of above
6 lakhs is winnings from horse race. Out of above, 3 lakhs is long-term capital gains on equity shares STT paid. Out of above, 2 lakhs is short-term capital gains on equity shares STT paid. Out of above, 10 lakhs is long-term capital gains on sale of land. Assume that Mr. A has opted out of default tax regime. कर पाएंगे क्वेश्चन? हाँ, चलो करो बेटा. Solve it, come on, do it. Solve guys, solve, come on.
क्या बेटा हो गया क्या? डिफिकल्ट है क्या? एज नहीं बोला क्या मैंने? बोला ना एज। डिफॉल्ट, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट बोला मैंने, इसका मतलब क्या है? ऑप्शनल। अरे बराबर है ना यार, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट बोला ना। अरे ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है यार? वो डिफॉल्ट से बाहर आया, मतलब किसमें है वो? तो फिर अरे सीधा बोलना, क्या ऑप्शनल बोल के ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट बोल तो समझ में नहीं आता क्या? मीनिंग तो वही है ना। क्या बेटा, क्या यार ऐसा डिफॉल्ट करे क्या आप लोग सब? I didn't tell he opted for a default. I wrote the word opted out of default. चलो 2 मिनट, ठीक है, ले लो ले लो ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई नहीं, करो। ओ माय गॉड, इतना डिस्कस कर रहे हैं आप लोग, इतना डिफिकल्ट है क्या? हो गया, ठीक है। कैसा करेंगे बेटा, बोलो ना। पहले 6 लाख पे 30% विथ सेक्शन 115 बीबी, कितना हुआ ये? 1,80,000। फिर कितना है वो? नहीं, फिगर कितना है? 3 lakhs minus 1 lakh into 10% अंडर सेक्शन 112A। सेक्शन नंबर भी तो बोलो, याद हो जाएगा अपने आप, बराबर है ना, याद हो जाएगा अपने आप। सेक्शन याद रखने के लिए वापस मेहनत मत करो, बट जब करते तो तब बोलो, समझे क्या? डोंट ट्राई टू मगअप सेक्शंस, बट वो अपने आप याद हो जाएगा, रट्टा मत करो। नेक्स्ट, कितना है वो? 2 लाख का अंडर सेक्शन 111A, कितना बेटा? 30,000। और भी कुछ था लैंड सेल का, कितना है वो? 10 लाख का 20% अंडर सेक्शन बेटा, कितना बेटा? नाउ बैलेंस एट स्लैब रेट्स, बैलेंस एट स्लैब रेट्स, बैलेंस कितना है? तो ये क्या हो गया? अप टू 2.5 lakhs नील। ऑप्शनल ही है ना ये? कैसे पता ऑप्शनल है? आउट ऑफ डिफॉल्ट है, मीनिंग समझ में आया ना? 5 लाख टू 10 लाख का 20% है, दैट इज 1 लाख। अबाउट 10 लाख 30% है, कितना बेटा? और ये टोटल हो गया 4,12,500। अभी पूरा टोटल लेंगे, समझे क्या? 8 lakhs। वेरी गुड, इसको हम ऐड करेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%, कितना बेटा? 33 and the total is 8,76,000. That's it.
How many of you got same answer? Good. Lot of people. I think clarity आ गया ना, कमांड आया ना, कैसा करना है टैक्स कैलकुलेशन. देखो, first day where we were, today the third day where we are. That's it. It's just a process. Exam is only a test of knowledge. It's only incidental. But process, if you do correctly, exam is only an obligation. That's it. Process has to be right. That is more important. Clarity आ रहा है ना अभी? अगर पापा बोलेंगे अपने को कुछ प्रॉपर्टी लिए बेटा 10 साल पहले, अभी बेच रहे बेटा, सीए ने बोल रहा है 30% टैक्स लग रहा है, क्या करेंगे बेटा? क्या बोलेंगे उनको? पापा बोल रहे प्रॉपर्टी लिए बेटा 10 साल पहले, अभी बेच रहे हम लोग, सीए बोल रहा है 30% टैक्स लगेगा, क्या करना है बेटा? उनको बोलने का पापा 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 30% नहीं लगता है पापा, सिर्फ 20% लगता है पापा. सेक्शन 112 क्या बेटा? सीए सीए मत रखो, सीए बदल दो, हमको रख लो. जो भी सीए को दे रहे हो उसमें आधा मेरे को दे दो, मैं देख लूंगा बाकी सब. पापा पापा ठीक. एनीवेज, फन पार्ट. आई थिंक समझ में आ रहा है ना सबको? कमांड आ रहा है ना बेटा? कंट्रोल में आ रहा है ना सब कुछ? फॉर एग्जाम्पल पापा बोल रहे अरे बेटा हमने क्या हुआ है 4 महीने पहले कुछ शेयर लिया बेटा और अभी बेच रहा हूं, लोग बोल रहे 30% 10% टैक्स लगता है, क्या सही है बेटा? 15% बोलने का, पापा खुश हो जाएंगे. In fact, I'm not joking, because see, tax is all about, I already told yesterday itself, outflow of money is involved. Your pockets, pocket to nahi hai, but your pockets will burn in tax. So the proper knowledge you have, the proper compliance will do. That's why tax is a lovely subject. इसलिए मैं day 1 को बोला था, tax is a lovely subject for 2 reasons I told. First reason तो आपको समझ में आ गया. Second reason, I'm teaching, so I'll definitely make it lovely. Clear है? पक्का? 2 मिनट टाइम देंगे क्या? सिर्फ 2 मिनट्स. अभी तक क्या सेक्शंस पढ़े हम? फटाफट बोलो बेटा. 27 एसएससी, 29 225A, 231 234 previous year, section 3, section 4, section 87A rebate, 288A rounding off of income, 288B rounding off of tax, 115BB casual incomes, 115BBJ online games, 112 long-term capital gains, 112A long-term capital on sale of equity shares, units of equity oriented mutual fund or units of business trust to recognized stock exchange on which STT is paid is taxed at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Same case not long-term, short-term, 111A taxed at the rate of 15%. बराबर है ना बेटा? 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, 174 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग टाइम, 174A एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और पर्पस, 175 पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर टू अवॉइड टैक्स, 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस. पढ़े ना हम लोग ये सब? इसलिए मैं आपको कल बोला था, कल बोले जब 1-2 लोग ऐसा देख रहे थे, अच्छा लास्ट डे को पूरा सेक्शंस भर जाएगा, टेबल पूरा हो जाएगा क्या? अब आप ही बोलो, लास्ट डे को ये जगह बस हो गया क्या अपने लिए? सवाल ही नहीं है. 10 दिन बाद बसने होता ही है. कितने सेक्शन से वेट कर रहा था, कोई ना कोई पूछेंगे ये क्वेश्चन. 500 मजाक कर रहे हैं. लगभग आपके सिलेबस में कुछ अराउंड 70-80 सेक्शन रहेंगे, 100 के आसपास, उससे ज्यादा तो नहीं है. सर हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको क्या बोला था क्लियरली, सेक्शन हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं? ताकि सेक्शन के सहारा, अपने सेक्शन की हेल्प से विल बिकम परफेक्ट इन कॉन्सेप्ट. मैं क्लियर बोला था आपको, सीए इंटरवल पे एग्जाम में सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट सेक्शन नंबर के साथ जब पढ़ाई करते ना सर, अपनी परफेक्शन अलग लेवल पे पहुंचते हैं. इसलिए सेक्शन नंबर बहुत जरूरी है समझने के लिए. याद तो अपने आप हो जाएगा. इसलिए मैंने आपको बोला क्लियर लट्टा मारने की कोशिश मत करो. क्लियर है ना बेटा? और एक बार फर्स्ट चैप्टर खत्म होने का मैं आपको बोलूंगा, एक अलग बुक मेंटेन करना है अपने को, सेक्शंस बुक करके. इन दैट बुक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर समरी. वो आपको ही करना है. मैं आपको बोलूंगा कैसा करना है. आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 दिन स्पेंड करके आपको फिनिश करना है. शाम में आपके पास टाइम है तो हो जाएगा. रोज बैठने की जरूरत नहीं है. मतलब एक हफ्ता क्लास खत्म होने के बाद 2 दिन बैठना है, 2 पेपर लिखना है बस. आपको रिविजन के लिए आसान होगा वो. सी मेरे को 2 मिनट लगता है यार. लास्ट बैच में ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने बनाया, उसका जीरोक्स लेकर आपको देने के लिए 2 मिनट की काम है मेरे. 2 minutes or else I can type and give you in 1 day. But the problem is when you write, you will become perfect. उसके लिए मैं काम आपको दे रहा हूं. समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना? क्लियर एवरीबॉडी?
थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल डे एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड. एंड कल अपना क्लास नहीं है, बीइंग द फर्स्ट संडे, एंजॉय, हैव ए गुड टाइम, बट नेक्स्ट संडे आई टेक द क्लास. मे बी ऑल्टरनेट संडेज और समटाइम्स आई टेक. ऐसा होगा कि ऑल्टरनेट संडे क्लास रहेगा, कभी 2 संडे क्लास नहीं रहेगा, कभी 2 संडे क्लास रहेगा, वैसा कुछ होगा. सर अपने को मिलेगा सिर्फ हार्डली, मेरे को लगता है कुछ 7-8 संडे तो मिलेगा मैक्सिमम मेरे को, उससे ज़्यादा तो मिलने वाला है नहीं. वो 7-8 संडे में मैं 2-3 संडे क्लास लूंगा बस. ठीक है क्या सर? मेक सेंस नो? somebody coming from all the way from Hyderabad, so consider that request. ठीक है? Thank you so much guys, have a great and wonderful day. Thank you, bye bye. ये क्यों नहीं आ रहा है यार इसमें से आवाज? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रहा है. कौन सा हिस्सा है? कौन तू? मैं हूँ टैग. आपको सुना ही होगा. डोंट माइंड, बस आपकी कमाई खाने आ जाते हैं. बचाओ. ये लगा है तो आवाज क्यों जा रहे हैं? बाय बेटा. अरे वो ऑफिस में एक बार वो शिवा को बोला ना बाहर. बाय बेटा.